One right. इडली चटनी तुम लोग को इडली चटनी खानी है? कॉर्नफ्लेक्स से चटनी कर रहा है। I love cornflakes. स्ट्रॉबेरी कॉर्नफ्लेक्स आधा स्ट्रॉबेरी कॉर्नफ्लेक्स Cornflakes is always bigger. तुझे तो ताकत करना है। इधर वापस नहीं 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 बेचारा मर गया। वही अबे मैं तो दोनों के बीच में भाई अजय जी थोड़ा मैं इधर से कूद गया अबे भोगलो देख तो सीधा ये आ गया सीधा मुझे कहा भाई को अंदर जा चोरी सक्सेसफुल कौन सा बोल आ रहा है इसमें नहीं क्या है चोरी सक्सेसफुल अच्छा मतलब तूने दो फोन निकाल एक का तो फिर वापस से बैठ के अरे क्या देखिए वापस मैं देख लिया अरे वीडियो का क्या भाई आप सारे पाकिस्तानी जीडी की तरह इधर हो गए ना सारे तुम ये हो गया अरे और तो बस हो गया देख वीडियो को दे वापस दे पहले अरे हो गई कुछ तो जरा करो देख लिया ध्यान नहीं किया दो बार कर दिया हाँ ये तो चाहिए अभी क्यों अरे बॉटल खोल उसमें तीनों भाई बड़ा वो मर चुका है कोई बात नहीं है वो कोई ऑप्शन देखना छोड़ आ गया इट्स नॉट अ पर्टिकुलर फैमिली कौन बोल रहा है ये हो जाए कभी बैठ गया मुझे ऐसा कुछ नहीं भी जाना से बच्चे जगह पर बैठा है नहीं जो प्लेस आईसीसी वो जो वेबसाइट है ओ यार ओए वेबसाइट अबे मेरा दोस्त अबे मेरा बैट का बिजली उड़ा दिया अरे अबे रुक तो सही भाई सन में मर गया ले उसको वापस आने उसको ग्रेड है अरे वो मैं मेरा वाला करीब में मेरे को तो मैंने बोला तो उसकी मार दी रुको बस अरे मैं मर गया भाई अरे ये बाबू अबे ये ना बहुत और पोजीशन में भाई अबे मैं बहुत और पोजीशन में हूं मैं मर गया आया स्लो आ गई मेरा वो बैलेंस का पता था ये तो सेम don't dare ये क्या दिख रहा है इतना मस्त दिख रहा है जाओ नहीं करना मैंने एक छोटा कोका-कोला ये बटर स्कॉच everybody studies जो भी बात कर रहा है
मेरी बात होगी बात जय देव ये मान रहेगा जाता है भाई इसलिए काटे They are fighting and girls are enjoying. Yes, Sir, we were talking about ourselves. We were not talking to them. All the three come out. Come out first of all. Go out. Sir, मैं You are waiting for my lecture. Go out. No. Acha, you sit down. You three come. Sir, You two come. Wait. Hey boy, relax. I don't want to get it recorded. Both of you come out. Stand out. I said go. Don't waste my time. I'll pull you quickly. That 15 minutes of break. This is the hangama going on. Girls cannot come and say to any management people. You are also inside the class. And if something goes wrong, you are also caught in. And put your head leg down and say, what is this way of sitting? Don't this proper. Right? You being a responsible girl. And why every break these boys are behaving like, wait. You say about your role. No. Come. ठीक है कहाँ से भागा टेप पे मार के आया बैठ sit down. Any one of you should get up and come and tell me I'm right here or to the office fellow. What, sir? No, you sit up. So what happened? Nothing happened. Sit down. Sir, आपकी बाइक देखी हम. Avenger ना? Nice. Sit down. Thank you. Sit down. Sir, I'm in a difference free and you are talking. No need to say so. Remain out of. Sir, एक right. अरे बैठो my dear friend. Sir, please, sir. Sir, nice. Will you close the door? If you disturb me, then I will allow you. You know my nature. I said close the door. No. Remain out. You get up. Get up and say. Sir, मैं लगता है Speak in English. Sir, do you think, sir, I can beat? Why should I think for you? That only, sir. I have lot of other headache to think. Sir, You remain this standing. was there, this But was- why were you involved in it? Sir, I was there. But Drag is there. I am sitting Hey, there. pick up your books quickly. Everyone, come on. And then, I am sitting there, sir. That's why. Come out, sir. देखो, if those guys are doing He's not sitting there. wait, I'll tell you. Right. Close the door. They are listening very patiently. Close the door. Sir, you what happened? I am sitting here. Sir is sitting here. Then I directly come here and I sit that side only fully. Acha, you all parents are nearby only, na? Now you go to the office. Jao. Mayur is there. You go to the office. Mayur is there. Ask them to call all your 3 parents here by the first break. Ja, don't. You They are go. not there. Nobody is there. Mayur will speak and pick up that biscuit wrapper also. Give it to him. Jao. No, wait. Acha, yours is there. No, give it to him. Give it to him. Don't disturb my class. जाओ मयूर को बोलना कि मैंने बोला तीनों का पेरेंट को कॉल लगा के इन द नेक्स्ट ब्रेक आई नीड टू सी एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स जल्दी जाओ Sir, they are not there. हाँ ठीक है सर एक उसको पूछो मेरा पेन कहाँ रखा? उसको कहीं को पूछो ना मेरा पेन. वेट you give the wrapper to him. No, I will. Give it to him. I will not go in. Sit up. You two guys go to your Mayur sir and ask him to इन दोनों का पेरेंट्स को है ना इनके सामने फोन करने बोलना और बोलना कि लेक्चर का ब्रेक में इन दोनों का पेरेंट्स में जो no very good sit nothing अरे तो बैठ अभी don't disturb जाओ will you close the door let them call I let the call come from that side and listen come listen whatever you are doing I'm going to call his parents also Okay, sir, you are not hitting each other. so then you roll on each other will you go and say will you go no I am not accepting you sorry let me refer this incident why Mayur इन दोनों को उधर बुलाना they both are disturbing इन दोनों का पेरेंट को नेक्स्ट लेक्चर का ब्रेक में बुलाना जब
You keep quiet. I said keep quiet. Here only. Tell me what I was doing last class. We are given a homework for geography to complete the answer. Second chapter I have started. Yes. Did we complete the chapter? Yes, the chapter was completed. We were on the question answers and 4 were from homework. Okay. Did I start with economic second chapter? No, na? No. Put that. Sectors. The sector we have started, we have given notes. But are we in that same chapter only? Yes. Chalo. Come on. Every lecture I come, before coming this, the lecture break also they are shouting like hooligans. So, What was the topic that I was doing? Chapter But in that, which topic I was doing? check. No, you sit here only. You are not to be studying. No. You come and greet me in the room so beautifully, and this is the picture I see. Whatever you are involved. Sir, book. No need. Sit without the book only. And it will be. मुझे book का तो जरूरत ही नहीं है. मुझे तो और ही कुछ जरूरत. Economics, just check what was the last topic I was doing. Sectors of Indian economy. Did we do historical? Sir, we finished rising importance of private sector. Very good. What is the next topic? Sir, we have studied inequality. Okay. Chalo. Let's go into this. It's okay. It's okay. Put the heading. Guys, write few lines for this. So you were about to give the notes for tertiary sector. Okay, we'll mark it in the volume. I'll give it. Wait. What is the order? Tertiary sector. Okay. Hey guys, before you put the heading, there is one part left. Come on, everyone, start writing. No explanation for this class. Telling every time I'm coming, this is the picture I will show. ऐसे ही बैठ. अभी जो note दे रहा हूँ ना, you are going to write 15 times. आज ही. देखता हूँ. आज मतलब before the 4th lecture I want the notes. That is very my way of taking you. Na? I like you too much. हाँ लिख अभी. Parents को नहीं बुला रहा ना, then this is the condition. Try नहीं करेगा तो then also I will call the parent. Write down. जा ले. इधर ही ले. Why you? Write down. Also known as service sector. Next time you take up the responsibility. These guys are new and go and report them quickly. You and Aditi are old students. You know. Also known as service sector. Sir, we have done GDP. No, GDP is just one line. ये लिख ले. फिर मैं तेरे को भी देता हूँ. Because no goods are produced. This is also service sector because no goods are produced. In comparison to SNP. What is SNP? Secondary and full stop. And primary sector. One more line. Mera. It is the most important. What? It is the most important sector generating jobs too. It is the most important sector generating jobs to highly qualified IT professionals, banking and insurance agents, highly qualified IT professional, banking and insurance agents, highly professional Highly qualified IT professionals, banking and insurance agents, and also
qualified teachers and also qualified teachers. Then the last sentence, qualified teachers. This is the only sector. This is the only sector which ensures a faster pace of economic development. This is the only sector which ensures. Why were you absent in the first two lectures? You coming now? Faster pace of economic development ensures a faster pace of economic development. So we haven't signed the. You haven't signed any. Boy, are you there to write or to do check chat? तू इधर bench में यार. I'm not asking you to come down. Thank you. अरे इधर आने बोला मतलब तूने उधर कुछ किया है क्या? You only tell. कुछ किया है? नहीं ना फिर इधर आना. Talk like you guys only. फालतू. These three guys only came in when I was having my small branch. So आपका lecture के लिए waiting कर रहे हैं. सर आपको ये wait ये सबके सामने बोलता हूँ. और मैं wait करने के बाद अंदर आता हूँ. ये hooligans की तरह एक के ऊपर एक है. वो बात में ठीक है. बोला. हैंडल लॉक किया क्यों उठा रहा है? सर वो हमारा स्कूटी नहीं था. वो इतना बड़ा रोड है बस मेरा बाइक. सर पूरा का पूरा एरिया पूरा एकदम पैक हुआ था. हाँ तो इधर आ जा. ये गेट के पास है. यहाँ पीछे से उठा के ले गया. नहीं ऑड इवन लगाए तो नहीं लेते. जाने दे. ए राइट जीडीपी ना. Faster pace of economic development. हाँ. So did you pick up from that what do you call it that Nikki or properly निकाला? नहीं कुछ किया ही नहीं सर. अच्छा तुम्हारा स्कूटी का है अंदर. Domestic product defined as GDP लिखो. Gross domestic product defined as KS. Gross domestic product. Yes. Defined as money value of all final G and S. G मतलब goods, S मतलब service. Defined as Money value of all final goods and services. All final goods and services produced during one financial year. Attention should be here. Why are you giving smiles to him? Distracted brains. so what is the financial year? India में 31st March to 1st April of the next year. Once. हाँ एक साल लगेगा. Sir can you read this? New one. Write down unequal. Sorry. Penny. But अभी क्या करना है? मेरा भी throat का थोड़ा सा ये Gross domestic. repetition button आज करा रहा था. मैं आप लोग किस तरह Value of all final goods. नो नहीं सॉरी तो क्या करना है? During one financial year. उन लोग कर रहा था मेरा नजर ये आउटसाइड अथॉरिटी. उन लोग भी आपसे अच्छा बिहेव करें. वो अरे लुकिंग का तो सवाल ही नहीं है. कसा भी दिखता था इतू सा पतला दुबला. उसने मारा 139 को. मैं अभी तू कब कसा बनेगा who knows? He is the most valuable Atangwadi India has got life and putting hand punishment. So they honorable. सारा परेशानी का घर तू ही है. नहीं सर बिल्कुल नहीं. तो फिर why were you involved? Sir, हमारे साउथ में कहा होता है दुश्मन को देखकर ना दूर खड़े. अब you are not involved, you are with them, then you are also caught. सर दूर हो. Listen, तू explanation मत दे. तो बहुत ईमानदार है चुपचाप अंदर बैठा है तुझे. हाँ बस. कर लूँगा सर. Right on, boys, girls as well. Hey, listen. Now, when I talk about unequal distribution, everyone just listen. We have primary sector, secondary sector, and tertiary. देखो अभी मैंने tertiary में बोला highly qualified, good standard of living, good income, वो सब नहीं लिखा.
But then under tertiary sector also we have these people who are providing services. You know, plumbers, painters, etc. etc. Their income, why, or their standard of living is not at par with whom? Any doctors, lawyers, etc. 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 So under the tertiary sector also the income distribution is equal or unequal? Unequal. So we are going to talk on these people now. When they are providing services, अभी service sector पूरा में डर जा wash it and come जो nuisance activity here. After 2 minutes put it in the mouth. पहले भी एक बार तुझे बोला मैंने. So neither their income nor standard of living plus even their employment, correct? How it is throughout the year? 12 months उनको मिलता है? No. I can say only seasonal employment they get. What is seasonal? जब season रहेगा तो. Like we have this, what do you call this? AC technicians. Correct? Now they are enjoying because what? It is high summer. But imagine a country like where winter is for 9 months out of the 12. So how many months he'll be getting a job? Hardly 3 months he'll be getting a job. So this is what we are talking. So within the tertiary sector also, the inequality of what? Income, distribution, standard of living and employment is seen. So it is there in the volume. You read everyone silently. If you are happy, I will not give you. If not, I will give you my own voice. Okay, Atwa? Number 10 here. I don't know who to miss. Then one will be here, you, and you will be here. पहला अंदर pick up, no need. Sorry, वो बोलते जो नहीं करते बार बार. जा. I am happily speaking. I don't have any animosity for anyone. What is the page number in UT volume? It is 159. Come on, everyone, read. How old am I? 155. Like I am warning all the boys and especially some girls also. Because this class is creating nuisance not to me, all the teachers. I know how to handle these pupils. I don't want that I can move to nothing. It's all in the. Take to page number 155, unequal distribution, economics, and start reading. Start. Reading. We have to write. Relax. आके मुझे रूम में ऐसे मिलता और इधर आके ऐसा बिहेवियर दिखता है. तो how will I reactively tell? पढ़ो. ये भी स्माइल स्टूडेंट. और तू क्या है? पढ़. सबसे unequal distribution पढ़. फिलहाल अभी वही पढ़ लेगा. तो इतना पुत्र जैसे कि मैं महाभारत दे दिया तेरा एक कांड पढ़. कांड तो उधर करते रहते नहीं है. ऊपर दे 155. Whatever I am speaking, do the address can ask. Yes. Or am I speaking in French or Italian or Spanish? नहीं ना? तो करो. 4 lines are given again. 4 lines are. Okay. 4 points. तो चलेंगे. Can you give one definition? ठीक है. Come on, write down everyone. Unequal distribution. They have not explained what it is, but they They are just one point. Yeah, my भाई बंधु. Correct. What she said. What correct? Repeat. There is not definition of this. I'll be very happy if you could have spoken before. ऐसा कुछ दिखाओ. Very. Write down. इस गरीब को कोई पेन दो यार. जब से है पेन मांग. नहीं है कि तेरे पास. It's so rare. It's what and So what has happened to? What डाला? not. किधर? वो एक बटन ही प्रेस करने का है. तू क्या बोल रहा है? मशीन द्वारा वैसे कभी इलेक्शन का स्टार्ट देख भी नहीं. What has happened? What has happened? I was doing my project and Caesar was here. Cut. Caesar was not here. Your finger went inside the Caesar. See. लक्ष्मी पेन का कैप देखो. बोलो. इलेक्शन में उससे दो. दो तेरी लगा क्यों रहेगी? तुम क्या वोटिंग के लिए हॉलीडे. रहना.
Yeah. I am flying. मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेस बंद रहेगा, स्कूल्स तो वैसे भी बंद है ना। तुझे छुट्टी क्यों है, तू जा रहा है रिपोर्टिंग करने? मनाली जा रहा है। हाँ, जिस दिन जाएगा ना मुझे बोल दे, मैं छुट्टी दे रहा हूँ। कल जा रहा है तो अब 18 के बिलो 19। अच्छा वोटिंग के लेकर नहीं ये ऐसा कुछ अरे मैं सब स्कूल अभी आया। where did you go to, where is your house my dear? बहुत जल्दी आ गया, दूसरा लेक्चर पे आता है वो संपड़ा का उत्तर right now. It refers to or it means within the tertiary sector. It means within the tertiary sector there is within the tertiary sector there is unequal distribution of income employment and unequal distribution of income, employment and job opportunities throughout the year. Job opportunities throughout the year. Second point. Second point. It clearly signifies a large chunk or large group. It clearly signifies large group of laborers. अच्छा ठीक है, large group of laborers inside the bracket. ये लिखो कौन है वो? Plumbers, painters, fitters, turner, etc. No, these are the group of people. Plumbers, painters, etc. समझने के लिए तो है, etc. Do not find continuous employment in a year. Do not find continuous employment throughout in a year or throughout the year. Last. Done. ठीक है, thank you. You are a most responsible boy. Only when I am here. Throughout the year. Last. Hence. Yeah. Hence. These group must be paid more attention with respect to employment and standard of living. Employment and standard of living. Now read this, tell me. Abhi 1, 2 and 3 are going to narrate this answer in next. Standard of living. Everyone will come here. Standard of living. Kanpur ka bada घोटाला है. This entire para which I dictated. Others also start learning. And this girl also. So what do you mean by this group must be paid more attention? Abhi देखो, I said the entire class. I am only teaching this part of the class. I am segregating you. What will you do? What will you do? Sir, without They will be very happy. अच्छा चलो tension नहीं है इसी को पढ़ा. But I should give you equal distribution ना. So you will demand jobs from me, or you will demand ऐसा कैसा हम लोग ने भी फीस भरा है और हम इधर बैठा है हमको भी attention है. हाँ? Why should I? वो तो मैं आता नहीं हूँ चलिए. एक्स्ट्रा क्लास नहीं देना है क्योंकि जो इन क्लास में ही तुम्हारा हैबिट ऐसा है तो एक्स्ट्रा क्लास में कैसा रहेगा है ना? ठीक है, थैंक यू. हाँ जी. without the book. हाँ फिर क्या विद द बुक मेमोराइज कौन करने बोलेगा? एंड दिस गर्ल विल बी बिगिनिंग. कम ऑन. हाँ. So what do you mean? हाँ, what do you mean? What do you Special attention मतलब इस ग्रुप के लिए government should try to give them job. Sir, first point. Hmm. When I
No, whole answer. First principle. I counted this point. They already have employment opportunities when so many other people don't even have those minimal opportunities. So you are looking at a graver picture. Now we are concentrating on this unequal distribution. That's it. Unequal distribution, whether those guys comes here, we do not know. Na? So, unequal distribution within the tertiary sector. Bus. Yeah, but skills and everything. But that don't we- compare. If I have qualified for last 15 years, I've got it. I have the every right to ask the government. The government is unable to provide, then I say, damn. है ना? Why should I compare myself? Sir, मुझे तो 3 महीना मिलता है, उसको तो 1 महीना भी नहीं मिलता. It's not my headache. Government taking. Sir, Done? Sir, Please explain the thought. Can you please be quiet when I enter the classroom? You answer my question. Then, कौन सा तरीका है बैठने का? और turn. हाँ, where did I ask you to sit? इधर आ. उधर चिपक कर बैठना जरूरी है. अरे इसको मैं आ रही नहीं इधर आ. बस 1 महीना नहीं हुआ इधर पूरे रंग बिरंगी पिक्चर दिख रहा है. पूरा साल भर कैसे यूज किया? हाँ तू चुप कर. Rather एक जैसी. I don't want to say you are best, he is worst. है ना बेचारा वो मुंह बंद करके बैठा रहता पता नहीं वो. हाँ? He wants the book for study. just someone said. They come inside. Let it be. Let him knock the door. Why should I look up? My concentration is here. Write the next heading. They will feel bad. No problem. You get out. I will feel very good. And You'll feel bad. Chalo, write the next heading. Have any communication done without my permission? Wait, I'm coming. Write the next heading. Unemployment. बोलना तू या तो नौकरी है. अच्छा अटेंडेंस. कोई चार दोनों का पेरेंट्स को कॉल करना. तो वो सके तो ये ब्रेक में बोलो. हाँ hello. Who has not signed? Write down. Next heading is वो तो मार दे. ये तो अभी आई होगी. हाँ? unemployment. Unemployment. Economic situation. Unemployment is an economic situation in which no doubt, no question and answer. Unemployment is an economic. तो क्यों बहस रहा है? Is an economic situation in a person in which a person is able. Bracket में लिखो mental and physically fit. Mentally plus physically fit. Qualify. Educated and trained. educated. Is that what they look at? And most important, must have the will to work. जो इंडियंस में काम चल रहा है. Must have. तुम लोग भी देखो ना. Must have the will to work. But still unable to find a job. So if a person is not. You write, my dear. First लिख तो ले. तुम्हारा सारा क्वेश्चन का आंसर मैं देना और मेरा एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना. Bas. Now again, explanation from your side, not me. So what is written after staying unable? To Able. Sir, able or Unable to. this unable to. Because you don't know my method of teaching for I don't know what you guys are taught by other teachers. I never compare. But I know how best I'm doing it and how shortly I'm doing it.
and you guys are on the pranky mood. Pranks चालू होते class में पूरा. One, you don't know how to value your teacher. Two, how to be. Two, तेरा मुंह बंद रख. सबका जो responsibility लेगा, उसका तो लेने का. Sir, one last. No, sir. Please, Sir, sir. this was the first time I. First is the last. No, sir, this is the first time. Okay, keep debating with me. I can add more imposition when the parents come. Good. Sir, are these politicians considered to be employed? That's a good question. How do they get paid? Like one, you are a politician. Two, you are a if you are elected, you are qualified to be worthy. I mean, not elected to be basically उनको पैसे कहाँ से आते हैं, you know best. I mean, if we put all politicians into this group, na, majority will be unemployed. I mean, Rahul Gandhi has ran away from Wayanad. He has ran away from the professional constituency of Amethi. जहाँ दूसरा लेडी ने पकड़ लिया. अभी वो बेचारा उसका मम्मी का constituency में जाकर बैठा है आई करेली. वो भी उनका पूरा पुश्तैनी लोग उधर से ही जीतते हैं. इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, उधर से भी यह हालत है. What will I rate? But he has so much money holding, है ना? He and his mother have done. Nobody can even judge कि कितना पैसा मिलेगा. 140 लाख में एक प्रॉपर्टी खरीदा है जिसका आज का वैल्यू है 530 करोड़. But he buys अपने 20 लाख का चेक देके उस प्रॉपर्टी खरीदा. सोचो. In China आज भी इनका पापा के नाम से चंदा देता रहता है राजीव गांधी फंड में. वो भी 200-300 मिलियन डॉलर आता है इसको. क्यों सर? गांधी परिवार है छोड़ो. Officially, they will be unemployed if they have been employed somewhere. Na, they also go politician. Even if किसमें गिनी. If they like, if a politician is like elected, Then you are an employed person. then Na, it's employed. yeah, If employed. you are not employed, you're like in opposition or something. Well, normally, when we consider this employed and unemployed, it's like your dad and me. Correct. Official jobs. Which is America is one country has got a very good discussion. America is a one country they give you layoff fund. For an Indian, what is layoff fund? Nobody knows. Once you're I've been working with duty for 6 months, for example. Then I'm laid off. Department ने मुझे निकाल दिया सर आपका मेथड है ये देखो बच्चे सब कैसे टेंशन में रहते हैं और मैं बिना जॉब का बैठा हूँ. I will apply to the government and I'll show कि 6 महीने के बाद मुझे यूपी निकाल दिया. And government has to give me $300 to $700 per month as per my qualification and job. Till I don't get a job. हाँ चले तो उधर बहुत लोग ये उल्लू बना सकते हैं गवर्नमेंट को. Majority of my non-white friends they यही काम करेंगे 4 महीने काम करेंगे और 8 महीना वो फंड लेके बैठे रहेंगे. So खाने का पीने very big amount $700 for one person for US and multiplied by lakhs of people and US doesn't short of fund. US has so much money. When I employed myself into the Mantralaya department, Mantralaya मतलब government में नहीं एक employment exchange है. I was so happy 2 दिन लाइन में खड़े रहे थे सुबह 5 बजे फिर मुझे एक छोटा सा employment कार्ड दिया उसमें नीचे लिखा है till you don't get a job 250 rupees per month. मैं रजिस्टर करके 15 साल हुआ रहेगा आज तक 2 रुपए नहीं मिला था. क्यों मिलेगा ना? Government cannot provide you because our country is not that position. अभी देखो Mr. Modi once he comes back to the throne once again ना he's going to bring a lot of changes. Don't beg for a job, create a job. उसने already करके ही रखा है. After 12 you can start your own startup, a firm, a unicorn. And you can start before. गवर्नमेंट देता है पैसे. अभी लेडीज के लिए 10 लाख रुपए देता है जिसमें 3 साल का अगर तुम लोगों ने नुकसान देखा है पूरा पैसा माफ. हमको तो नहीं देता. Sir, so that's so easy, sir. अब नुकसान दिखाने के लिए you can even like. तो इधर भी चलता है actually, इधर भी चलता है इसमें कि नहीं. But checks इतना strong है ना forgery में you will be inside. कैसे sir? Sir, अब ठीक है wait. After degree are you planning to do like this? No, neither I have done. Then what should I give you explanation for a wrong course? Now let us focus on the right course. Are you going to do forgery? छोड़ दे. हाँ शक्ल से दिखता है करेगा ना और तू भी साथ में मिलके ही करेगा. ट्राई करने में कुछ नहीं बस ऐसे ही लगा गवर्नमेंट को चुना. वैसे पैसा नहीं दे सर. कौन बोला? उनके खुद के लोग चुना. ऐसा कुछ नहीं. इंडियन गवर्नमेंट का गोल्ड डिपॉजिट अमेरिका से 10 गुना ज्यादा है. नहीं सर तो वो बीच में लूपहोल्स है तो कितने सारे. देखो लूपहोल्स का फायदा उठाना I as a teacher will not teach you. Neither I will. नहीं like the people. What does you become an administrator, you become a lawyer, you go into the parliament, make such laws. नहीं like the. नहीं तो सब बोल ही रहे. One of my friend in UK हर बात में अलग ही नहीं तो फोन रख. क्या हो गया? हर बात में नहीं. Sir, it's like
Again you are saying. Yes, sir. I was telling कि government officers themselves make these loopholes. Not themselves. They only make use of these loopholes. Okay, every law has its own trouble. I mean, you may not be knowing there were TADA, which was replaced by this one, और एक stick law है. मैं बताता हूँ, भूल गया. तो every law has. अभी मैं क्या करता हूँ as a politician, अभी ये मेरा नहीं है, देखो तेरा कितना ऐसे बैठा है. उसके ऊपर टाड़ा लग गया. टाड़ा is terrorist anti-disruptive act. अभी बेचारा ये तो जाएगा ही जाएगा, पूरा फैमिली को भी अंदर लेके जाएगा. Till I do not prove that he is not under the TADA, Mr. Sanjay Dutt, he was inside the jail. And that time his dad Sunil Dutt was a ruling MP था भाई साहब, and he was also Congress. That time BJP का तो nomination नहीं, Congress was very strong. Congress ने हाथ खड़ा कर दिया, तेरा बेटा टाड़ा में गया, हमको बच कर दे. And it was Bala Saheb Thackeray. He had the guts to take that fellow out from that case because he possessed the gun without the license and he was into the D gang type. पता नहीं कैसे किया, but somehow he pulled Sanjay Dutt out of that case. सही है. Even his attendance. What's your name? And? And? Buffer. Bhavya and Pari. Chalo, because these questions I can keep answering, but at the 10th level, if your brain is working like that, I don't know, 11, 12, what are you going to do? Do it always on a positive side. Because if you feel there are many loopholes, why don't you file a PIL? You know what is a PIL? Your name will be thrown like anything. A student of 10 CBSE has got such a wonderful thought. And advertise नहीं किया तो तू फिर क्या होगा? लड़कियां तो लड़कियां, अगर तू interested है तो फिर बाकी जनरल पब्लिक की तेरे पीछे रहेगा. अरे क्या लड़का है, दिमाग की छोटे से उम्र में क्रिमिनल लाइन में काम कर रहा है. चल बताओ ना कैसे करना है. हाँ, कोई भी लॉयर को पकड़ और वो कर देता है, ऐसे ऊपर चार्ज मारेगा. ओके, एक पीआई डाल दे अपना सेशन कोर्ट में, इधर बेलापुर में नहीं है. ऐसे नहीं, बहुत सारा काम रहता है. Then you will be called in. Okay. देखो, there is a way to address and there is a way to you becoming popular and there is a way to attend also. ऐसे नहीं कि बिना मालूम पड़े अंदर घुस के तेरे ऊपर पीएल के फिर टपका दे तुझे इधर से पकड़ के, वो भी मत कर. So there are serious repercussions of certain things. So if you want to be neutral, हाँ सर, हो रहा है सर, होने दो सर, हमारा काम करो, खाना पिया करो, सो जाओ. No, I will raise. अभी everyone doesn't have that quality. You will want to raise, then you become Kejriwal like fellow. उसने रामलीला मैदान में क्या-क्या नहीं नौटंकी किया रहेगा. भाई साहब अभी जेल जाके दोबारा भी अंदर जाने का भी माहौल बढ़ रहा है. These guys came, I was watching his news and he has thoroughly beaten one of the ruling Rajya Sabha MP. And that also when he was inside the house and that fellow, one technical fellow is PA. What's his name? Something. He has beaten that lady. लेडी ने भी जम के लेडी ने भी जम के डाला उसको केस. अब देखो केजरीवाल अभी क्या करना है. He is a repeated offender and he is a क्या बोलता है ना thoroughly qualified criminal. उसे हर क्राइम से बाहर आता है. जाने दो. That's not our topic. Now I'm very happy that we should learn from him, not the negative. Some positive things are there. कितना भी हो जाए वो अपने मुंह से अपने आप को ईमानदार बोलना आज तक बंद नहीं किया. और वो भी क्या बोलता है खट्टर ईमानदार. हमारे घर में मेरे ऊपर जो लेडीज और बाकी जेंट्स ये पैसा कमाता है तुम्हें देता है ये, फिर हाँ यार मुझे बहुत गिल्ट होता है, ये शायद सच बोल रहा है. हमको अभी इसे बोलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं. एंड पूरा दुनिया उसके पीछे बोलता है बट वो बोलता है नहीं मुझे नोबेल प्राइज देना चाहिए. तो शायद किसी ने पूछा रहेगा कौन देना चाहिए. कोई नहीं, मैं अपने आप को दे दूंगा. एंड बीइंग द सीएम ऑफ द स्टेट ही हैजंट टेकन एनी पोर्टफोलियो ऑन हिज नेम. मतलब एक भी सब्जेक्ट उसके हाथ में नहीं है. वो आतिशी मार ली ना, तो शी इज लर्नड फ्रॉम यूके, लंदन से कुछ पढ़ाई की है. उसका मुंह तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे फेंकेगा तो उसका इंसल्ट हो. Yesterday that lady was bitten, today morning she has given the report कि ये लेडी ऐसा है, लेडी वैसा है. अरे तेरा औकात ही नहीं बनता उसके बारे में बोलने के लिए. सर ये जो एमपी वाला चीज है इसमें मोदी क्या नाम था उसका? मोदी तेरा नहीं नरेंद्र मोदी बोल. नरेंद्र मोदी नहीं, ये क्या अरे वो डायमंड मर्चेंट कौन था? वो तो पुराना है ना. हाँ नीरव मोदी. वो उसका भी जो फादर था उसने भी पॉलिटिक्स में एंट्री किया था जस्ट. ये ना हम लेक्चर के बारे में बात करेंगे. चल लेट्स मूव. I'm running away from the topic. Put the heading in your notebook.
Underemployment. Brother, एक word ही दिया. I give the definition. Underemployment. Yes. यूपी से है या कहाँ से? Underemployment. हाँ भैया underemployment. लिख रहा हूँ ना. Right now, special case of unemployment. It's a special type of unemployment. It's a special type of unemployment in which a person is found to be special type of unemployment in which a person is found to be employed far below to his qualification. अरे खींच एक लेता है इसी में से तेरा मेंटल कंडीशन वो भी ऐसा वायलेंट वाला है सर एक और डाउट नहीं अभी नहीं बस अंडर एम्प्लॉयमेंट स्पेशल टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन व्हिच अ पर्सन इज फाउंड टू बी एम्प्लॉयड बिलो टू हिज और हर क्वालिफिकेशन तो चुपचाप लिख below to his or her qualification. Example: a qualified teacher is working as a clerk. मतलब ऑफिस का जो एडमिन का काम करता है ना आप लोग का स्कूल में वो हाँ रिसेप्शन है या आप लोग जहाँ फीस भरने जाता है वैसा टाइप है फ्रंट डेस्क qualified teacher working as a clerk, although he is paid clerk semicolon don't understand although he is paid but economy loses the service of a valuable teacher. Economy loses the services of a valuable teacher. Now let us have a small discussion on this. I will not be discussing, you guys only. Abhi compare karo. English. Valuable services of a teacher. Sir. No, only based on the topic. Underemployment isn't something very terrible because there is a sense of employment, there is a sense of income that they're getting. Again, I come to the point that there are people out there who don't get incomes at all. Yes, Sir, I will become a social activist someday. देखो if I say unemployment and underemployment, which one you find serious? Sir, वो तो जॉब ही नहीं करता है हाँ why underemployment होगा Sir, because the girl or a man is qualified. a girl and a man No, or girl and a man he or she बोल he or she is qualified, एक में girl बोल सकते हैं ये बोले तो public मारे but she don't get a job sufficient to her qualification. sufficient मतलब क्या है मायने देखो when you are saying a teacher is getting a job अब बोलते क्या सर घर पे तो नहीं बैठा ना काम तो कर रहा है and he is getting as money also wait but then he has spent his number of years in getting a qualified क्या हो गया मस्त बना मेरे साथ सब मैं बना सकता हूँ क्या है wait so we always believe both unemployment and underemployment has to be solved but I feel underemployment has to be solved because every day I am going to the school not as a teacher but as a clerk अब इसका क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ हाँ ऐसे discouraging what is this why I am working what kind of pay and you are seeing a teacher who is nothing better than you but he has become the coordinator in the group अभी मैं उनको कॉलेज में और the principal हाँ dishonest अब लगेगा यार ऐसा वैसा लोगों को टीचर का जॉब मिला और मैं इनके क्लर्क का काम कर it's like an auto rickshaw driver taking you to an exam where you are studying related trigonometry or some physics And he said, मैंने बोला ना this is and the rickshaw driver is saying sir वो sin theta का वैसे नहीं सर cosec upon 1 into tan into 100 तो तू I mean intake कर तो फिर क्या कर जॉब नहीं मिला मैं रिक्शा चला Sir, बहुत हाँ बहुत लोग हैं इंडिया में बहुत लोग हैं हाँ so we have to address them properly if not what will happen the day when they get a time to do some misbehavior जैसे ये मेरा friend बार-बार पूछता रहता है or do some anti social element they will first join the group because उनका वो frustration रहता है mind में
अभी देखो I don't know about student, even I have been a student like, but अभी मैं इस बच्चे को कुछ गुस्से में बोला तो बोले भाई ये कौन है इसको क्या बात है एक फ्रस्ट्रेशन रहता है ना सबके सामने इंसल्ट कर and yet you know इंटरेस्ट डाउन कर दिया मुश्किल से तो बना नहीं अंदर मन की बात लेकिन से अलगेश को मिलने दो या तो उसका गाड़ी या लोग नंबर पे कुछ कर देते हैं गाड़ी एग्जांपल what I'm saying these frustration might lead to some other problem अभी आपके मम्मी और पापा is very strict for your studies and you are nothing having any say to them but एक build होता है pressure and फिर वो pressure कुकर की तरह बाहर तो निकलता नहीं अंदर ही दबा रहता the day when you are totally angry you blast and पापा बोलते निकल जा वैसे भी रहना बंद कर वो बैंक बैलेंस कम है जरा पैसे दे दे फिर मैं निकल नो पापा will say like that I'm just saying it मेरे को बोल दे हां तो तेरा हाथ पे भी वैसे ही लग रहा है मुझे बातों में ही इतना बता रहा है so we always believe that I need my employment section to be happy when they come to me and they go home also नहीं सर मुझे नहीं करने वाला नहीं जाओ नहीं कर इधर हमारे कॉलेज में बस और 240 पे पंच सब टीचर्स लाइन में टाइम बंद करके भाग जाते एंड फिर हमको बोला अलग प्लीज कम फिर हमारा चेकअप 3:30 है I sit sometime up till 6 today we have completed a lot madam it's 6 why sit up till 8 मतलब तू प्रिंसिपल है बैठना मुझे क्या पता चलती नहीं मेरा लॉगिन टाइम 3:30 तक ही रहता है and from there I pick up these bikes you have seen and I try to travel 1 hour 15 minutes 20 minutes का distance में रहता हूँ कल या परसों मेरे कलीग मिला तो वही बोला सर आप बोला 1 घंटे का रास्ता है और आप 20 मिनट में कैसे आते सोचना कैसे आते उड़ के थोड़ी आते सर वो बिगिनिंग बोल रहा था बहुत स्पीड बहुत चला अच्छे था चलाते कब इंग्लिश में Sir, next ICSE. ग्राउंड अच्छा वो फुटबॉल प्लेयर हाँ। अच्छा बात में so why I'm saying that frustration is there in my mind and that frustration I don't want you guys to get treatment what does it mean frustration सर तो मम्मी को कॉल मत करो वो frustration है my dear I need to just tell them कि आपका बच्चा हाँ बोलो अरे वेट लेट देम कॉल इसको मैं फ्रस्ट्रेशन नहीं बोलूंगा आप अगर ऐसा बिहेव करेगा आप ऐसे टीचर होके कैसे वेरी गुड बेटा और करो ऐसे चढ़ जा मिनट में ऐसा बोलेगा नहीं ना फर्स्ट एंड लास्ट चांस प्लीज अच्छा रहने देना कॉल गया तो आई विल सी डोंट आई कॉम्प्लीमेंट मम्मा फिर डांटेगी ना सर कल इसको मनाली जाना मैं भी आ जा मेरी मम्मी जानी तो आज मना ले फिर मना ली सर वो सब सेकंड प्लीज लेट अस कम टू आवर टॉपिक अंडर एम्प्लॉयमेंट चल लेट्स मूव ऑन एक तो मिस्टेक करो और ऊपर से मुझे बोलो आई एम कि सेइंग यू सॉरी सर दिस वाज फर्स्ट एंड so why should I accept the sorry सर अपॉलॉजी लेटर तो लिख के दे बस ए कम टू पेज नंबर 156 अनएम्प्लॉयमेंट के नीचे एक बड़ा पैराग्राफ है आई विल गिव हर टू रीड एवरीवन बी रेडी विद द पेंसिल नो आफ्टरवर्ड्स अंडर एम्प्लॉयमेंट में दूंगा अंडर एम्प्लॉयमेंट तीनों सेक्टर में वो तुझे ही दूंगा क्योंकि तू बहुत बड़बड़ करता है ना चलो Unemployment, a situation in which a sector of people who are able and willing to work but do not find gainful work is हां ये referred मैंने as दिया है ना चलो unemployed. When a person is unable to find any gainful work or job, that person is said to be unemployed. The concept of underemployment. okay Introduction. This is the situation where people are apparently working but all of them are made to work less than their potential. underline no less their potential अभी how do you identify your potential come on anybody Your qualification, your experience. अरे तुम लोग का potential बोला I say you are able to get 90 and above but then you are एक example है वो तो लाएगा तब देखा जाएगा but then you are getting only 70 तुरंत जो ब्लेम करेगा एक तो पेपर स्ट्रिक्ट था और वो उसने करेक्शन किया ऐसा कैसा मुझे बोला but you will not take the blame why you will not take the blame because you feel that you have done below to your potential so what is potential your hidden qualities or your hidden and always try to perform above your potential not below so below your potential what it is underemployment carry on It is a common feature of Indian agriculture. In this phenomenon, more members of family are employed on a piece of land than actually required by modern methods of production. Example, in agriculture, more than 70% of the total population is engaged, where only 50% of the population can be accommodated profitably.
By applying more members, the production does not increase and these members can work elsewhere to generate income. Example. If she is reading, what is the important message he is asking? क्या कर रहा है तू इधर आ बोल इधर आ come here. Continuously discussing. Carry on. Example, in textile industries, such type of disguised unemployment is created. ये एक नया definition है. Put that in your notebook and wait for it. We've done it last year. Disguised unemployment. Come on, go ahead. Large number of workers are employed due to lack of modernization of technology. Owing to this, the output becomes less and the workers are also paid with low wages. Underline employment less भी हो जाएगा and they'll get less fee. Okay, go ahead. Similarly, in service sectors such as banking, the efficiency of services get deteriorated due to more number of staff and lesser number of self-help systems such as ATMs. Underline the word deteriorated. How do you define this word deteriorated? The like of getting worsened off. Bad every day. Becoming bad every day. WORAC. Go ahead. They may spend the whole day but earn very little. Underemployment in all three sectors. So should I continue reading? Go on. Go for Primary sector. The primary sector is more afflicted with disguised unemployment. Okay. Since in this sector, agriculture offers maximum employment and the laborers employed are more than the actual requirement. For example, take the case of a small farmer, Lakshmi, owning about 2 hectares of unirrigated land is dependent only on rain and growing crops like jawar and arhar. Okay. Now, if I say unemployment is underemployment in all the three sectors, just understand when I'm saying just it is in primary sector, correct? Now, underemployment what? They have given a case where out of 10 laborers, only 5 laborers are doing the job and they are adding to the productivity. The rest plus 5 are not adding any production. They are seen to be working but not adding to production. इसको हम लोग disguised unemployment बोलेंगे. What is disguised? छुपा हुआ है. But are they adding to the production? No, sir. But then हम government को figure that 10 persons are working in a farm. But when I say underemployment in primary sector, where that lady or whoever, she is well qualified to get good production, but she is not having a farm of her own. Correct? So the farm है plus उसके पास फिर facilities के लिए पैसे नहीं. So besides she being a capable farmer, she is underemployed in which sector? Primary, that too also in which sector? Agricultural sector. So this might prove dangerous for which sector? Primary. Okay, let's go to second one. All 5 members of Lakshmi's family work in secondary. Secondary sector. Secondary sector that is involved in manufacturing and processing also faces the situation of underemployment. Only under manufacturing and processing. But the situation is less serious than primary sector. For example, a small size manufacturing and processing unit that does not have the latest technology employs more people than the actual requirement in order to increase its production. Tertiary sector. This sector also faces a situation of underemployment. Especially in urban areas, thousands of casual workers in the service sector search for daily employment. Okay, underline that word daily. For example, painters, plumbers, electricians, and repair persons who are not employed on regular basis look for jobs, but many of them don't find work every day. ये मैंने already answer में दिया है, correct है ना? Yes. Similarly, we see other people of the service sector on the street pushing a cart or selling something, where they may spend the whole day but earn very little. Underline whole day but very little. Example to overcome underemployment. Take the case of Lakshmi with her 2-hectare plot of unirrigated land. The government can spend some money or banks can provide a loan to construct a well for her family to irrigate the land. Lakshmi will then be able to irrigate her land and take a second crop, wheat, during the Rabi season. Let us suppose that 1 hectare of wheat can provide employment to 2 people for 50 days, including sowing, watering, fertilizer, application, and harvest. So, 2 more members of the family can be employed in her own field.
Now, suppose a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farms. This can lead to a lot of employment generation within the agricultural sector itself, reducing the problem of underemployment. Creating employment opportunities. The following are the suggested measures of creating more employment in the different sectors of the economy. If the local bank provides credit at reasonable rate of interest, they will be able to buy seeds, fertilizers, and agricultural equipment. This would lead to better productivity and creation of work for more people in agriculture. Underline that word, better productivity. How beautifully she is reading, that's what you have to understand. And then I'm also just giving that explanation. Go ahead. The process of identifying, promoting, and locating small-scale industries in semi-rural areas where a large number of people may be employed. Many farmers decide to grow arhar and chickpea. So, setting up a dal mill to procure and process these and sell in the cities is one such example. The opening of a cold storage would give an opportunity for farmers to store their products like potatoes, onions, and sell them when the price is good. Hey, what is this cold storage? Anybody knows? Where we store इतना अंतर है और बाकी मस्ती का टाइम बराबर कर. Go ahead. It's okay. The establishment of honey collection centers in villages near forest areas where farmers can come up and sell wild honey. To set up industries that process vegetables and agricultural produce like potatoes, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruits which can be sold in outside markets. It will lead to the generation of employment in industries located in semi-rural areas and not necessarily in large urban centers. If the government invests some money in transportation and storage of crops or makes better rural roads so that mini trucks reach everywhere, several farmers who now have access to water can continue to grow and sell these crops. These activities can provide productive employment to not just farmers but also others such as those in services like transport or trade. For health centers to be improved, as there is a need for more doctors, nurses, health workers, etc. Wait. There's a burning example of a country called UK, which is running through serious trouble. That's how Brexit क्या लिया है, and plus ये Gulf War बोल रहे हैं. Ukraine and Russian war में तो खत्म. Inflation is to the highest, and the economy is running through serious trouble. ये उनका 40 years पहले भी ऐसे हुआ था, but it came up. Now nobody knows. But एक NLC है, National Health Center या hospital बोलते हैं. उधर अभी भी demand है, and Indian nurses, Indian doctors are demanded. When they get a salary monthly pay package of 3 to 7 lakhs Indian currency. So which sectors can develop despite whatever might be the trouble? The health sector. How about education? That will also never go down. But unless and until you are working under the government setup of UK, you will not be paid the salary at par. पूरा दुनिया में दो country है. One is Dubai, where the salary for the teachers are very high. But बहुत lobbying चल रहा है, बहुत admission चाहिए, बहुत सारा. And there is a European country called Luxembourg. Yes. It's Luxembourg. a neighboring country. So they give more preference to the German workers, less preference to the French. Asian को तो देते भी नहीं. And I tried my level best. So the European loan है जरूरी. आपका EU passport. Plus the GDP of that small country is 10 times higher than what is US. It is the richest country in America, in Europe. But then you and me cannot enter into. There are certain hurdles. Or Monaco is the richest. Monaco to Monaco, I know. Monaco Monaco is a country. Monaco is a East African. No, Monaco. Either way. But based on what you are saying, it's just GDP. Luxembourg. हाँ फिर रहेगा. Luxembourg अच्छा है. Monaco या Monaco मैंने देखा नहीं, शायद रहेगा. I am sure. So we always believe every country has its own trouble. I mean, India is fast-paced developing, but India is not become developed. Now we are running through these political issues. कि कौन आएगा, 400 पार आएगा, 300 पार आएगा, जो भी है. By the time the 4th June, the results are declared, and then also government आते directly shoot नहीं होगा. It will take some time. You know, the last 15 years, what he has done, he has to do double what he has done in this 15 years. Then might India land up somewhere down there. And in between, India is forcefully dragged by China.
चलो पाकिस्तान को तो हम लोग वैसे भी फिर भी देख सकते हैं, बट चाइना वी कांट because of its huge mighty capital bar and that PLA तो इंडिया का आर्मी के सामने कुछ नहीं है, but then also it will cause trouble. So India first and preference avoiding war. They always feel the war expense of India can pull India back 15 years back. Understood? With respect to what? GDP. And so India has a very smart way of handling this warring nations with very smart talks. And we have a good MEA, Minister of External Affairs, Mr. S. Jaishankar, Sudarshan Jaishankar. He was not even elected as the MP, but then also Mr. Modi appointed him as an MP and directly given the job, which is very difficult after the death of Sheila Dixit. This is Sheila Dixit. But ये बंदा इतना qualified है, he has worked in different foreign countries for representing government of India for long years. And he has married a Japanese woman. वो उनका personal affair है, why he is married. But he is the person so responsible to bring bullet train to India. And Japan ने जो पैसा invest किया है ना, it has hardly asked 0.01% as the interest rate. Plus वो पैसा पूरा जापान ने हमको 99 years के लिए दिया. You know what is 99 years means? Almost zero cost में हमको पूरा पैसा है. So what does it mean? This is smart politicians. अभी politician बोल रहा था. So we have very credible politicians, very ईमानदार politicians, very hardworking. But रहेगा अभी pond में तो हर fish, you know that there are some fish. अभी I can't eliminate सबकूटा के बाहर तक. अभी when I saw the Narendra Modi ji's election nomination, जब वो जाके ऑफिसर दिया, उसने अपना एसेट डिस्क्लोज किया. उसका बैंक बैलेंस कितना रहेगा जरा सोचो. We can't trust it fully. But then at least election commission ऐसे ही मानता नहीं. They do a thorough checkup. He is having only 52,470 rupees in his two accounts. But रहता है लाखों का बंगले में रहता है, ट्रैवल करता है, ड्रेस ही वेयर्स. As a Prime Minister of India, he is getting every facility. But बैंक बैलेंस भाई साहब का तो शायद मेरा भी बैलेंस उससे ज्यादा है. But can I compare? और मैं किधर मोदी और किधर हम? Are you understanding what I'm saying? So whether she is saying he might have kept or not have kept, but उसके नाम से इतना ही total cash balance, so property तो है ही नहीं उसका. हाँ, उसने जो शॉल से लेके वो सब मिलता है, उसने बोला 250 crores भाई साहब ने कमाया है, and he has given that entire 50 crores to the government of India. For frankly, who in a heck of a politician does all this? And he might be showing a different picture to us. You never know. Let the people judge it. Let the election result come out. And I don't know when he came to Mumbai. Did you see? I think the pictures. It was thoroughly welcome. Marathi ladies, and I could see small guys. आप लोग के तरह ही, not even 10 years old. And one of the boys was answering beautifully. The best prime minister. And he has done. Yeah, इसका राम मंदिर के बारे में बोल रहा है, उरी अटैक के बारे में बोल रहा है. 10 साल का लड़के को इतना नॉलेज. मतलब आपको क्या लगता है? हाँ, दोबारा वही आना चाहिए. We want prime minister who is hardworking, ईमानदार. अभी 10 साल के लड़के में इतना नॉलेज है about him. It's very difficult to understand what kind of future citizens we will have. Very knowledgeable रहना चाहिए. अभी हमारे 10th का कौन है सर? क्या है सर? ऑप्शन पढ़ता ही. अरे पढ़ने का क्या जरूरत है? Whenever you are sitting free time, what's the news? Understand and try to study the laws. कि वो law कर रहे तो laws के बारे में पढ़ो. Indian laws have now come to such a scale. अभी Mr. Kejriwal has thoroughly checked inside his own house. वरना CM के घर में पुलिस घुसना तो impossible है. आज एक CIA टीम भी अंदर घुसा है, वो पूरा चेक करेगा कि वो लेडी सच बोल रही है, झूठ बोल रही है. अगर सब कुछ प्रूव हो जाता है, उसका तो थोड़ी तो केजरीवाल is always a offender, अंदर बाहर होता रहता है. But the PA who has done it, he is also gone for life. So every law has its own loophole. But then positive side भी देखो, what it is law is giving. अभी ना molestation cases are very dangerous nowadays. For a teacher telling a girl or a boy to get something done in a harsh way can be against him or her. Understood what I am saying? So similarly, I feel even students should be given some more moral code of conduct to the teachers. So अभी तक नहीं है, because you guys are juvenile, you don't understand the laws. Teacher से कैसा बात करने का, कितना हम ये कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं. But हमने रिवर्ट किया तो हो गया हमारे पर लग गया. क्यों लग गया? Because I as an adult citizen have to abide by the rules and regulations. You as a juvenile, आपको तो वो escape, but juvenile court अलग से रहता है.
And you guys are quite, if you are involved in any, you need to control the uneducated guys in the. And उनको बेचारे punishment तो होता है, but अंदर उनको पढ़ाई के लिए, schools के लिए सारा facility government provide करता है. 10 के juvenile court बोलते हैं, below 18 criminals. if at all ये लगता है. तो देखो कोर्ट में भी बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए पहला प्रोविजंस पैदा होती है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा बच्चा हमारा इंडिया के लिए कितना बड़ा एसेट है अभी आपको तो मालूम नहीं पड़ेगा. तो यू आर रनिंग अवे फ्रॉम हाउ मच बिग गवर्नमेंट स्पेंड्स. नहीं चल रहा है तो अपना फीस देता है या देता है. देयर आर 90% ऑफ द स्कूल्स व्हिच आर एडेड बाय द गवर्नमेंट. यू नो देयर इज अ आरटीई. एक्चुअली हमारे कॉलेज में चालू रहता है आरटीई बोलते रहते हैं. क्या रहती सर वो आरटीई है. Up till 8, in majority of the schools, government do not ask any fees from the students. Government funds them. Right to education apply होता है. 9th and 10th के बाद में active fees आने चाहिए. Understood what I'm saying? So every government has its own department, every rules, everyone has to follow. अभी राहुल गांधी हर जगह बोलता फिरता रहता है कि अगर मोदी जीत जाएगा, he will change the constitution. सबसे ज़्यादा constitutional amendment उसका नानी नहीं लाया. मिसेस इंदिरा गांधी अभी उसको वो भी नहीं याद रहेगा कि कौन कितना रहा है. अभी कॉन्स्टिट्यूशन को अगर मोदी चेंज करेगा तो देयर इज अ प्रोसेस. ऐसा नहीं कि तुरंत उठा के नया चेंज करना. नो इट्स इम्पॉसिबल. हां ही हैज टू गो थ्रू लॉट ऑफ चेंजेस. अभी 400 मिनिस्टर है आउट ऑफ 552. ही कैन नॉट डू एनी दादागिरी, है ना. सो वी ऑलवेज बिलीव इफ समवन इज स्पीकिंग और एड्रेसिंग अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट हैव दैट नॉलेज. हेलो हमको तो नॉलेज इधर क्या चलता रहता है वो छोड़ के और ही किधर ही मेरा ब्रेन भाग रहा है. तो फिर कैसे हम लोग यूज करेंगे. So if I'm even discriminating with you, I should be doing positive discrimination. What is that positive? कि बच्चा मेरे बच्चा दोबारा next ऐसा ना करे. No, I cannot see him. You throw it. Okay. I might have done bigger mistake than these three guys. But that day अगर मेरा टीचर ने उठा के मुझे बाहर फेंकता, today I would not have become a teacher. These guys were all debating with me. बोला रुको मैं बुला रहा हूँ. That only irritated me. वो डोर ओपन करके आई वाज बिजी टीचिंग. दैट यू शुड डू इट. हां व्हाट इज इट So, abrogating Article 370 is a smart गुड और decision. हां अच्छा यू डोंट से इट्स अ स्मार्ट डिसीजन. ना आई एम आस्किंग. देखो कितना स्मार्ट है अभी पता नहीं है, बट वेरी क्विकली ऑल द थ्री स्टेट इज गोइंग टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट. लद्दाख, जम्मू और कश्मीर. एंड आई एम वेटिंग फॉर द डे व्हेन इलेक्शंस विल बी हेल्ड. वो यूटी नहीं रहना चाहिए, स्टेट होना चाहिए. उनका खुद का एक चीफ मिनिस्टर, खुद का गवर्नर. सो क्या हो जाता है ना, इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर जो आप लोग कर रहे हैं will come alive. And for so many years we did not have any minister from Ladakh. जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर लद्दाख आता था. Well, Ladakh will get its own CM, its own ministers. Ladakh is much bigger than what is Jammu and Kashmir, whether you know or not. Geographically, Ladakh बहुत बड़ा है. And it's very good province to be getting its status quick. अभी जैसे आप में अगर कोई good qualities है, I should nurture that. If it is bad qualities, I should suppress that. If I am doing other way around, by क्या है? हाँ तो जा ना फिर क्यों सबसे सिग्नल छोड़ते हुए जा रहे? जा जल्दी. हाँ let's proceed. Okay. Unemployment, underemployment and tertiary. एक काम करो. Now put the heading in your notebook. Underemployment in primary sector. Points आप खुद बनाएंगे. 2 point बनाओ बस. Underemployment in secondary sector, make 2 points. Underemployment in tertiary sector, make 2 points. Simple short points बनाओ. थोड़ा सा positivity आपने भी लिखा है. ये ना तीनों सेक्टर का 2 पॉइंट लिखिए. Quick, I need to check. What the next? हाँ, but points के बाद example आएगा. पहले example नहीं आएगा. She's clueless to something. You understood? Okay. Listen. You show me the volume. Your volume. Show me. You carry on. That is the reason, na. My dear. और unemployment के बाद इधर देखो ये और ये 2 points लिखना. हाँ 3 headings से 2 points. 6 points हो गए. Rise unemployment and underemployment No, are different.
This guy is normally in primary sector ज़्यादा है तीनों में. All the three sectors find out as the government to be. Everything might be spoon feeding in the trouble start. Where is second year student? Okay, today we will start the third chapter of geography. ये almost साढ़े 10 मिनट में chapter खत्म है. Objectives कर लो, MCQs कर लो, जो भी 10 marks का क्या 15 दो 3 marks या 4 marks का दो आएगा बाकी सबका ऑब्जेक्टिव और एनसीईआरटी थोड़ा सा कर लो प्लस एनसीईआरटी कर लो. सर पेपर आपने बनाया नहीं कर नॉट ये पेपर सिंपल है पर डिस्क्लोज तो कुछ नहीं. सर प्रैक्टिस बहुत इजी कौन सा डेवलपमेंट अरे उसका बहुत सिंपल सा चैप्टर है उसके लिए इतना टेंशन लेगा. Guys, anyone complete? I'm coming down to check. About to complete. Coming down to check. Let's see. As we are taking the lectures so seriously. Thanks. This entire chapter is not very great.
Because exactly volume she has got all the points. So very good to क्यों? नहीं हाँ बहुत बस छापने का काम Sir, क्या sir, in primary more affected by disease and failure. Majorly agricultural activities. Then can I give an example? that is an underemployment only ना then you without taking the name of the lady वो explain करो the poor farmer without minimum farm can contribute more है ना तो मैं बोर्ड में भी ऐसे लिख सकता हूँ you start solving that bullshit My geography volume needs to be right. Homework questions. yeah I will not till I not accept your call okay, whichever chapters I am completing please start learning so let me get नहीं क्यों पढ़ोगे क्यों ना Sir, देखना दोनों ने सेम ही लिखो नहीं अलग हाँ तो ठीक है जैसा सही I remember I from which year before I went to doctor you ऐसे भी उसको लड़कियों का भी आता है very small 10th ICSE बच्चा उसने मुझे last day of their ICSE she gave me a letter regarding my teaching उसने क्रम करके एकदम short and शायद अभी भी मैंने कहीं का प्राइस में रखा है I used to call it the cheering this letter I was going to give the break but you okay no I give this to the everyone don't worry I will not हाँ तो दो ना मुझे So primary अभी ग्रेड है कम कम से मुझे एक चैप्टर भी खत्म करना है और नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है तो these are the points तूने कुछ लिखा क्या सर आप बोले 15 वाले से चलेगा लिखिए देखने सर एक नहीं मत लिख अभी लेटर नहीं डोंट गो सर प्लीज अरे तू पहले तू काम तो कर इस बात है ना ये वेतन तीनों की तरफ से सर ठीक है लिखा है I appreciate both the failed to write together. Don't do. The parents come also. They won't come. I will ensure that. I will let you do. है ना? And try to block them. No need to come. सर आप तारीफ कर रहे थे किस बात का? वैसे तुम बोलो क्या ना? मैं तो बता. These guys have come in my teaching, है ना? In front of the parents only I try for parents, not against you. But then after वैसे करके है ना किसी? parents are नहीं आपको मालूम नहीं बोल जितना मैं जानता हूँ वैसा नहीं है चलो तो करते हैं मस्ती should not affect your studies अब ये उम्र में नहीं करेगा तो कब करेगा या दीदी का है The points primary secondary. हाँ जी एकदम नहीं 11 एग्जाम क्यों नहीं लिखा कोई Even I go and check with my what he has done for the college. ये किसका बुक था? सर हमारे राउत हाँ क्या?
Wait, sir. Only one parent, Parveen, you are. They're connected, but your mother is in the office. Whenever I don't see, they have written a letter. You say, I'll have a polite word with them. Only look. My parents got checked. Sir, And I need 1 point just if at all I feel, only call it, no, no call. Better. Who kept it? 12:30, 12:45. 12:30 को देखे. till 12. What What? is 11 to 12:30? Sir, अभी आप लाइट दो. क्यों नहीं हुआ? Sir, Alright. उनके मेरे क्या पगले कैसे निकले? Sir, ये क्या है? इसके आगे का नोट्स कब करेगा? सर ये पॉइंट इसने लिखे हैं अभी. क्या गोल का पकड़ रहा है? बस ट्राई टू इंप्रूव ये. Why do you need a second? I'm interested in second. First one read the This sector also face a situation of underemployment, especially urban areas. so tertiary ना with reference to cases of plumbers and मैंने दिया था वही तो सेम ही है उसी को छाप दे. ये किसका दे रहा है? You are. But you are busy laughing when these guys are fighting. Jokes with them. So they were not actually involved in. मतलब you are involved. Partially I was involved in, sir. And partially. Why is that partially? Go fully na boy. Right, partially. हाँ. Partially तो पूरा करेंगे. Partially. What is that partial involvement? Like 2 points we can say. Partial में कुछ फायदा नहीं होगा. देखो ICC were many less, but I was talking about the L1 sending pictures to India. आदित्य L1 सुना है ना सब लोग ने? उसने हाँ predict किया है कि there is a big sunstorm going to hit. If at all it hits India, Yes sir. then पहला आपका मोबाइल फोन्स बंद होने वाले. सर वो नेट भी बंद कर देंगे बेसिकली लाइट्स वगैरह की ऑफ. हाँ because लाइट तो जा रही है. सर पूरे दिन heightened geothermal activity. but I don't know about whether it सर is तो बहुत टेंस हो सकती है. बहुत होने दो ना. सर कितने हम भी हो सकते हैं. They have not put the date or time, but they said there is a sunstorm which might hit India, which might. सर उससे क्या होगा? पूरा सैटेलाइट Too much खत्म. time. So for all of it, डायरेक्ट अभी पूरे You want me to play that video? Yes. लाइट ऑफ होगा. सर आप एक बाइक भी सकते हो. वो हीटर से हीट करेगी हाँ बच्ची slow. अच्छा है क्या बंदा? गर्मी के कारण सर नए का I don't believe even the news channel. हाँ? एशियन नए का वो संबल करेंगे. होगा अभी क्या करेगा? सैटेलाइट खराब होके जलने से अच्छा. पोटेंशियल का स्पेलिंग क्या? पोटेन ही है. ना तो फिर इतना स्पेलिंग मिस्टेक मत कर. ठंडा पानी पीते. ठीक है ये ओके. वेयर इज द थर्ड? अच्छा ये टर्सरी. आई गेस आई और मैच. ठीक है बट ऐसा स्पेलिंग मिस्टेक मत. ठीक. Hey guys, write the next. अरे नो ऑलरेडी Wait, अभी start हो गया. बस maintain the काम. Hey, put that heading in your notebook. NREGA. It's a very short 5 minutes में हो जाएगा. NREGA. अरे NREGA क्या क्या क्या? I we did this last year. National Rural Employment Generation Act 2005. एंड रहेगा. 2000. And now if in exam they bounce you with मनरेगा. महात्मा हाँ गांधी. सेम है बट गांधी परिवार का डोमिनेंस इधर भी दिखता है. महात्मा गांधी वरना नेशनल
रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. चलो लिखो नोटबुक में जल्दी. सर जल्दी लिखना है. हाँ अभी लिखना है. I'm giving English prefer better. employment guarantee act. नहीं वो सर अपने ऐप बाद में दिखाना. हाँ वो अगर पूछेगा तो एग्जाम में सेम है प्रोग्राम मनरेगा. चलाई. It was launched in जल्दी ब्रेक में एम्प्लॉयमेंट के बाद गारंटी act launched in. Sir, थोड़ी reverse बोलो. हाँ ठीक है. Why don't you improve your English? Yes, I will. हाँ Now wait. for now. आपका मैं देता हूँ. Write down. Yes. He said yes also. No, yes. Introduced in the year, implemented in the year 2005 in most backward district. Introduce. In the year 2005 in most backward districts. Put I can write 625 in number. Most backward district 625 in number. Second point. In the year 2005. In 625 backward districts in India. Actually, the 6 बोला है फिर. हाँ ठीक है. Sir, परेशान करके. It's okay. Second point. Right to work. रुक जा. मुझे उसको है ना थोड़ा सा. Was ensured. Right to work was ensured through this act by providing minimum of 100 days assured employment. Minimum of 100 days of assured employment in a year. Assured employment, 100 days of assured employment in a year for every rural household. For every rural household. One more sentence. So continue on New. Yes. Next point. The government provides a minimum wage allowance. Wage allowance कितना देते हैं ना? तो भी देते. Minimum wage allowance ALL वो WANC. A minimum wage allowance of 250 to 300 rupees per day per person. 250 to 300 rupees per day per person. Change the paragraph. Such programs can be a game changer to reduce rising unemployment in rural areas. Such programs can be a game changer Yes. in rural areas to reduce unemployment. Thank you. Will come exactly, and now I'll see what is the picture when I come 15 minutes. Partial to leave mark. Why are you? Because I'm warning you. Sir, break होगा. तो ब्रेक में भी मस्ती चाहिए. मस्ती हमने भी किया था. देखा ना क्या The हुआ. answers I'll get them corrected after the break. The text of answers are. That's okay. गुस्सा नहीं है. ये उसका लेटर लिखने नहीं लेटर लिखने अच्छा है सुनाना गूगल से छाप के आधा मैंने हार्ड वर्ड्स नहीं लेटर के लिए मैंने एक टू वर्ड
They are told that they will make this lecture. That's all. That's all we do. Ha, we will show you. Write the next heading. Division of sectors. The new chapter. No, same chapter. Sir, that solar video. Ah, very deaf when these children were saying. Oh, he is not here. He seems he is the only scholar person here. That is the reason. No scholar, sir. Right, so. If first you write down this heading and write the notes. Organize the sector. Then second, you only write up till here. Unorganized sector. Okay. Third, it's public sector. Private sector. And private sector. Write the first point under this. Don't copy all the heading. Okay. So, it refers to Of organic sector. organic किधर है? Organized. Correct. It refers to it refers to those enterprises or firms. Refers to those enterprises or firms which provides. Correct? I mean, now you write one below the other like this. I'll give you short sentences. Easy for you to learn also. It's NS because I'm feeling Oh, लेकिन remote लिख रहा था. It's so much. Which provides A. Right. Fixed hours of work. Fixed hours of work with equal payment. Fixed hours of work with equal payment. Second or B, Sir, what? fixed hours of work with equal payment. B, high job security. High job security. C, try to restrict, not give you too much. Fixed method of appointment and removal. Fixed method of appointment or removal. Method of employment. Appointment and removal. Next. Firms are registered. D, right? Yes, firms are registered. Firms. Yeah. Yes, sir. Firms are registered under government rules and regulations. Firms are registered under government rules and regulations. Open bracket if you want. क्या है? Factories Act. Factories Act मतलब law है ना government का. कौन सा rules है? Minimum Wage Act, etc. Firms are registered under government rules and regulations. Minimum Wage Act, Factory Act, etc. Next and the last point. E. Sir, D or E? अभी जो भी है अभी मैं वो याद नहीं रख रहा है. Along with the payment, paid leave, comma, PF and gratuity. Along with the payment, Paid leave, PF मतलब provident fund ना? Provident fund, PF and gratuity, as well as pensions. After retirement, चौक आवाज करेगा ठीक, not the market. After retirement.
Then you can, after I'll tell you. Then you write unorganized. हम लोग दो explain करते हैं, easy हो जाएगा. Unorganized. Under this, firms are small and scattered. Either. Under this, firms are small and scattered. Which are outside the control of government. Small and scattered, which are outside the control of government. Control of government. Next point, B. This was one of the points. This was just the big point. What it is. No. And now you can write A, correct. Good. That's it. You have to give short and small pointers, right? Very few rules and regulations. Very few rules and regulation. Bracket में डाल दो as per government. Very few rules and regulation. Bracket में as per government. देख यार वो भी pick up कर रहा है मेरा dictation. Good. कुछ नहीं खुले. As per the government are followed. B. No regular jobs. B बोला. No regular Jobs. Come on, less payment. नहीं तो इतना बड़ा बात करने वाला. I'm saying B and he's asking is it next point. तो A होने के बाद क्या आता है? B आता है ना. सिर्फ आपने पहले वाले पॉइंट को भी A बोल दिया. नहीं बोला था. Major point. Set up a task. Wait, how do you talk? Friends. So very mean. तो ऐसे ही बात करते हैं. ठीक. Not with me. Boy, listen. Humbleness will always be. You know that I'm joking. You don't know. ठीक है. It is B. Second point. ठीक है. Let us end the discussion then and there. We have less time to cover more work. No regular job with less payment. Next. C. Next point का मतलब B के बाद C रहेगा ना. So you said no regular jobs, less payment. बस short points ही दे रहा हूँ मैं. अच्छा एक मिनट रुका. Listen. देखो while I'm teaching or while I'm notes, this class ask maximum. अभी भाई साहब एक का new point पूछा. ये पूछा. राजनीति पूछ रहे. बस नहीं. And I'm just kidding you. So there are a lot of things there is mismatching between you and me, है ना? I'll make it very clear. When I said short points का मतलब क्या? ये bullet point जैसे रहेगा. In exam you can write it offers less payment, no job guarantee. वैसे आप लिखो. This is the grid points to make you रुकना. सबके लिए एडजस्ट करा. उधर देख रहा हूँ तो क्या मैं आपको नहीं एडजस्ट कर रहा. And then you should learn English. So these bullet points will help you to easily remember the answer. Formation and adding verbs, adverbs, nouns, that is your idea. 10th level इतना तो है ना. So देखो इससे क्या हो जाएगा ना, learning becomes faster. I mean, if I prepare for UPSC exam, they gave me 600 pages of 6 books, जिसका मैंने title भी नहीं पढ़ा था. And 2 British Council exams I have given. That time it was 35,000 each. They give a CD-ROM, they give a big book. मैं वो CD-ROM तो सुनने का तो टाइम ही नहीं था. I kept it like that easily. When I entered into the British Council board exam center, I could see people are all studying, sitting in one corner. वो उसका मम्मी पापा सब बैठा है. बोले यार मैं तो कुछ नहीं किया, ऐसे आ गया करके. But then I proved ये क्या? Teaching for so long, I have the confidence. And you are given one. There are 300 students in one classroom. पूरा तो इसी के थ्रू चलता है. एक क्वेश्चन को 1 मिनट में रीड करते हैं और 2 मिनट टाइम देता है. सेकंड क्वेश्चन को आई कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग. 100 क्वेश्चंस ऐसा लेसन कर रहा है. इट्स अ फुल एसी रूम. इट्स अ वेरी पॉश सेंटर ऑफ मुंबई.
But then also you listen to one person who is in a British accent. And that too, it was a long time before, I don't know, 10, 12 years before. So ये तो कुछ भी नहीं, there are now improved exams coming for you. अभी OMR sheets मालूम है सबको? And आपको पूरा आपका basic information OMR में ही भरना है. And I as a coordinator or examiner go there, I have to check each and मेरा एक signature उसका एक signature फिर वो seal खोलने का हमको दिखाना पड़ता है कि seal तोड़ रहा है, ये बहुत सारा नाटक है CBSE और SND24. नाटक नहीं है, rules है. Sir, which school? I am into university. Don't ask the university. मुझे अलग it's under Mumbai University. So we always believe that when you are going for the board exam, the first paper is always English. है ना? Where you have to be little bit positive that instruction which comes, second, third test ma'am, you are quite used to it. But first they will guide you each and everything. It's not necessary. If you make a mistake in the OMR sheet with that, अभी 4,17,000 कुछ है roll number, उसको भरना भी पड़ता है. इधर से वो इधर से ये दर्द है. बच्चा को 15 minutes पहले पेपर भी देना पड़ता है. And you are allowed to read through the paper. And then the one more bell goes. And then you have to start writing. ये तो चलो अंदर का सीन है, बाहर का सीन है, एक लेडीज 2 टीचर आएंगे, वो लड़कियों को चेक करेंगे, 2 जेंट्स टीचर वो लड़कों को चेक करेंगे. And majority जो मेरे स्टूडेंट है, क्या सर आपके स्टूडेंट ऐसे आते हैं, मतलब ठीक है सर उसके पास एडमिट कार्ड भी नहीं है. I have to call the office. वहाँ से मेरा प्रिंसिपल क्या नहीं ला, what is तो मैडम ने भेजो मेरा सर. She goes to the accounts department. ये सब क्यों बोल रहा हूँ? Because tensions है. It is now in my class that tensions are not there. We have come back to our class. So why so much of doubts you are having? And that also you are with me since last years. Hey, I am not blaming. I am saying she was in 9th year. So that is the reason. So get accustomed to a new person as quickly as possible. Varna, if life goes to HELL, which I never say to anyone. Which I am saying उसको मालूम नहीं है. What? हाँ, फिर ये मत बोलना मेरा घर का एड्रेस ही है, क्योंकि तू उसमें रहता है. Oh, hell is somewhere else. No, वे सब अपना ही दुनिया. उल्टा मुझे तो लग रहा है इस दुनिया से निकल जाएगा तो that is it. because इसमें जितना punishment है उधर नहीं है. Everyone understand this who is Chitragupta and who is this Yamadharma. So there is a mythological belief है कि आप जो भी पुण्य और पाप करता है ना, आपका फिर वो लोग रीड करना है ऐसा, हाँ भाई इसने ऐसे किया, और उसके अकॉर्डिंगली पनिशमेंट मिलता है. ये एक मान्यता है. नोबडी सी तूने क्या बोला? अभी आपने जो बोला कि इसका मतलब था कि हम लोग जब मरते हैं हमारी आत्मा को यमराज के पास लेके जाते हैं, वहाँ पे बताते हैं क्या आपने क्या पाप. वही मैंने शॉर्ट में बोली जरा रामायण का सेम चीज है. Then there were guys who were coming in. तो एक गाय आया था तो उसने बोला महाराज इसको बहुत सख्त सजा मिलना चाहिए. तो उसने बोला ये पॉलिटिशियन था बहुत सारा जिंदगी में, ठीक है इसको जलते हुए कढ़ाई क्या कढ़ाई में डाल दे. तो ऐसा सबका आ रहा था. एक बंदे का आ रहा था कि महाराज इसने 2 शादियां किया है, एक लड़कियों का जिंदगी नहीं, 2 लड़कियों का जिंदगी बर्बाद किया, इसको तो आप ऐसा सजा दीजिए जिंदगी में कोई नहीं भूलना चाहिए. तो महाराज खुद अपना चेयर से ऊँचे नीचे करता है, इसको कोई सजा मत देना, इसको जितना भी सजा मिला है उसको नीचे ही मिल गया है, इसको इज्जत से जाके स्वर्गलोक में छोड़ के आना. True sir, true. तो मतलब तो दूसरा भी करना है, तो 2 करने वाला है. एक होएगा भी चल बोले अब 2 बहुत कम हो गया. हाँ ठीक है 10 है लाइन में. So I am saying as a teacher how much I will be punished if I am punishing my any little students ना. सर ये वो टीचर है जो ब्रेक में 2 बच्चों के लिए उसने पेरेंट्स को फोन करवा दिया, लेटर लिखने बोला, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए. तो लोग एप्लीकेशन डालेंगे, हाँ आगे सर इधर कर. Nobody has seen, but it's just something to make your life coordinate. अभी हमने अब सीन की जो झूठ बोलता है उसको ये मतलब कुछ नहीं देखा है. हाँ इनफैक्ट इस कॉलेज में मैं स्कूल डेज में रहता था, एक जगह था भाई प्रो. तो मेरा एक दोस्त है, हाँ सच में उसको बोला भाई आज ना यार वो कौवा घास से काट खाने लगे इधर, and it was to bite. I used to laugh like on that friend. बहुत झूठ बोलता है. One day between me also. ऐसे नहीं कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं भी बोलता हूँ.
नहीं ऐसा नहीं है तो that was okay अच्छा तुझे भी तो मैंने क्या सजेस्ट किया नहीं ये क्रो को कुछ गड़बड़ हो गया हाँ इस क्रो को जरा चेक करना पड़ेगा ओनली कान ही काटता एंड मेजॉरिटी लोगों की ना रेडिएटर्स बिट तो शायद उसको किसी ने कवा को समझा रहेगा झूठ बोले कवा काटे उसको किसी ने समझा दिया वो काटता था अबे हाउ डू आई नो हाँ ऐसे इट है and we have been taken to one of the caves in the school days and caves are caves dark hai air nahi hai light nahi hai बैठती तो हो रहेगा but there is one of the room where is pitch black pitch black मतलब दिन में भी हम लोग 2 बजे के टाइम में वो केव के अंदर था हमारे साथ टीचर्स भी थे if you want to see your palm in that room standing like this you cannot see your palm also इतना डार्क कैनेडी केव्स के अंदर है पूरी और मतलब तो फिर मेरा दोस्त बोला आई चैलेंज में अंदर जाएगा मतलब भाई तू जा भाई हमको तो अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था एंड ही वेंट इन ही डिड नॉट कम फॉर हाफ एन आवर कहां गया था गॉड तो मैं बोलने वाला था गया एक बंदा गया सेक्रीफाइस आफ्टर फ्यू मिनट्स ही केम अभी बहुत अच्छा है मतलब क्यों अरे मैं अंदर तो गया डोर ढूंढ रहा था अंदर चले गए बट एग्जिट के लिए लाइट को देबाशीष माय स्टूडेंट कैनेडी केव्स एंड मैंने से क्या बोला अभी तू जाके दिखा मतलब खुद तो गया आधा घंटा अंदर कैसे तो बच के बाहर आया और मुझे अंदर देख लिया मैं आई एम कॉन्फिडेंट टू बी आप एक कैसे I went in ऐसे नहीं मैं डर रहा था but I went in not too much like this film then I think A class नहीं there is one other department where that's NCOM के lectures देता था they took me to Karjat somewhere here Karjat and there is a hill station in that Karjat which is called the Stunner Top सॉरी आपका चैप्टर से थोड़ा आप लोग भी रिलैक्स चलेगा सर हां बस यही चला ये टनल टॉप हिल स्टेशन का फेमस क्या था ओनली ड्यूरिंग द रेनफॉल इट ओपन्स एंड और एक अच्छा ही क्या था दे डोंट कुक एनी फूड यूजिंग द गैस स्टोव और केरोसिन स्टोव एवरीथिंग द गांव वाला सिगरी वाला एंड हमारा जो प्रिंसिपल था वो उसका नाम सचिन कर्नाटक था उसका प्रिंसिपल का नाटक है ना बस से स्टार्ट हो जाता एक तो अडल जोक मारेगा सारे लेडीज रहेंगे वो आपके सामने बता भी नहीं सकते उधर जाने के बाद क्या बोलेगा आज मैं प्रिंसिपल नहीं हूं तो सब लोग बोले क्यों सर क्या होगा आज मुझे आप लोग सचिन के नाम से ही बुलाएंगे तो तुरंत एक मेरा टीचर जो मेरे साथ था अकाउंट्स टीचर था ए सचिन इधर आ वो आया भी अरे इधर पानी का प्रबंध नहीं है जाओ पानी लेकर बेचारा भागा ये लो सर 2 बोतल पानी मैंने कुछ नहीं बोला अरे अभी एल्डरली फिल्म उससे हम लोग पकड़ लेते हैं मैं बोला क्यों ऐसे रुकना आज ही मौका मिल रहा है जितना चाहिए सचिन बोल कल से तो स्कूल कॉलेज में अपने दिमाग के ऊपर नाचेगा दूसरा बोला सचिन ये सर क्या हो गया अरे ये खाना कैसा बना है हमको ऐसा ऐसा रुको मैं भागा भी तो लुक एट दैट हम्बलनेस ऑफ दैट फेलो देन फिर हमको नेक्स्ट मॉर्निंग का एक ऐसा टेंट बना था एंड लालटेन मतलब नॉट प्रॉपर ऑयल वाला बल्ब था बट इट वाज लालटेन सो लेडीज वर इन अ डिफरेंट कैंपस एंड जेंट्स वर इन अ डिफरेंट कैंपस पहला अर्ली मॉर्निंग लाइन लगा वॉशरूम में है ना कोई भी अंदर बैठ के तो बाहर नहीं आ रहा है तो हमारे टीचर सर अंदर अकाउंट्स का सम सॉल्व नहीं करने का बाहर आओ इधर बहुत लाइन लग गई सम ब्रश वगैरह वो स्नान किया फिर वो मराठी था लोकल तो चला मी तुम्हाला घेऊन जा मतलब बॅचलर की महाराष्ट्र था दबदबा अभी मुझे मालूम नहीं था व्हाट इज दबदबा देन वन ऑफ वाटरफॉल हां तो मालूम दबदबा तो सब कुछ अच्छा था सर वाटरफॉल और पूरा हां पूरा मेरे शब्द पे जा रहा है डोंट फाइंड ये बॉय सर कॉन्फिडेंस मैं रुक जा देखो लोग अफेक्टेड लोग हैं तो कॉल करना एंड ये पूरा रास्ता ग्रीनरी से भरा हुआ है एंड देयर इज ओनली वन फुटपाथ वेयर ही वाज वॉकिंग एंड वी ईच वर फॉलोइंग और लेडीज का नाटक चालू हो गया वो लोग फिर नहीं फोटो नहीं था मोबाइल वन ऑफ देना नेटवर्क भी नहीं था एंड देन वी वर वॉकिंग तो मराठी में वो समझा रहा था तो मेरा टीचर ने बोला सर वो ऐसा बोलता है कि इसको जो पाथ दिख के आप चल रहे हैं ना उसको छोड़ के दूसरे पाथ में नहीं जाना बोले क्यों उसका क्या दादागिरी है सर पिछला टाइम जो पिकनिक आया उसमें से 2 टीचर अब तक नहीं मिला मतलब फुल जंगल एक रास्ता छोड़ा नहीं तो टेक यू समवेयर मतलब आपको लगेगा प्रॉपर जा रहा है बट आप अपना कैंप पे नहीं पहुंचेगा और किधर भी जंगली पहुंचेगा नो मोबाइल नो नेटवर्क कैसे कांटेक्ट करेगा तो मैंने बोला तो गया वाटरफॉल वाज वेरी हेवी एंड इट वाज pouring like anything
तो मैं और 2-3 टीचर्स थे, हम लोगों ने बहुत देर तक उस शवर बॉडी में गिरता तो ऐसा लगता कि कोई पता था भी। तो आई वाज देयर फॉर 10-15 मिनट्स। फिर मैं सोचा बाकी लोग नहीं सर हमको अभी और करना, ठीक है। निकला बाहर तो अरे यार ये बोला ये रूट से होना है, इसको क्या बोला नहीं। आई टुक द रूट वेरी कॉन्फिडेंटली, आई वाज वॉकिंग। 10 मिनट लगा, फिर मुझे लगा ये पेड़ पौधे और झाड़ तो मैंने नहीं देखा है। आई वाज गोइंग इन अ डिफरेंट रूट और कोई मेरे साथ आया भी नहीं, दे वर ऑल बिजी प्लेइंग इन द वाटर। मतलब रिटर्न कैसे जाएगा, या तो आगे जाऊं या तो पीछे आऊं। मैंने बोला ठीक है काम ये करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करनी है, वही रास्ता पकड़ के पीछे आ, है ना। पीछे आएगा तो मेरा 2 रूट्स गोइंग, पर सडनली एक प्रोफेसर का आवाज कहां से तो आया। फिर उसके सामने मैं नहीं बताने का ना कि मैं रास्ता भटक गया। अरे सर आप ये रूट से कैसे, आप मत भटको सर, चलो सर मैं लेके जाता हूं आपको। एंड आई जॉइंड इट। फिर मैंने आके फिर वो गाइड से बात किया, थोड़ा बहुत टूटा-फूटा मराठी में, बोला अच्छा किया आपने रिटर्न आया, क्योंकि क्या है ना ये रूट एक तो पहाड़ी है एंड नेक्स्ट इज जंगल एरिया। इन वेरी फ्यू टाइम्स पीपल कम टू नो कि ये गायब है, तो फिर भी 2 घंटे के बाद हम ढूंढने लगते हैं। इट इज डेंजरस। So whenever you are moving out with your friends or family or with your school, be very very sure कि उधर जाके ज्यादा अपना वो क्या बोलता है मस्ती, हाँ वो जरा कम कर। फिर पिकनिक का ऑपोजिट हो जाएगा वो तो और भी। फिर अभी एक लोग इमेजिन कर, I never gone in, तो मेरे कॉलेज में बोला था कोऑर्डिनेटर you need to take the students, और हमारे 12th के सारे स्टूडेंट एक नंबर है, ये तो कुछ भी नहीं है, all are political background, एक दूसरे को शायद दूसरा लाख हुआ है वो मुझे मालूम नहीं था। पूरा इमेजिन का मैं समझ मैनेज रिटर्निंग हुआ, आउट ऑफ 6 बसेस 2 बस से मुझे कॉल आया कि सर इधर बहुत बड़ा लफड़ा है जल्दी आओ। बोला अभी कहते हैं सर वो 12 के बच्चे नहीं सुन रहे। वो जो कोऑर्डिनेटर थी वो लेडी वो तो बस छोड़ के भाग के आई। तो आई वेंट इन टू सी क्या हो रहा है, एक लड़का काम से इधर से और इधर से पूरा खून। हाउ रुको आगे का कहानी तो फिर मैं जाते ही ना सब लोग ऐसा बैठा था, हेलो सर इधर क्या हो गया तुझे, सर वो बस से चढ़ा गया सर नीचे गिर गया तो ऐसा लग गया। तेरा ठीक है वो दूसरे का शर्ट सा फटा है सर, उसको नीचे गिर रहा था ऐसा पकड़ के बढ़। See, that's a good excuse. That is one that you should let तो them मैंने know. दोनों को खान पकड़ के खींच के बाहर लाया। तो बस में जो ऑर्गेनाइजर वगैरह थी सब अच्छा सर आप आए, मुझे लगा एक दूसरे को मारना लेकिन इतना तो मार डालेंगे तब कुछ नहीं, वो तो ठीक है। फिर जब हमारा कॉलेज पनवेल आने तक लोग चुपचाप बैठा था, तो जैसे आके उतरा वो जो मार खाया ना उसका 4 लड़के लोग कोई तो बुलाया जैसे जो मारा उसने बोला सर ये कुछ ना कुछ करेंगे। तो 9 बजे या 9:30 बजे रात में उतरे हम तो ये जो मारा ना वो उतरा ही नहीं था बस, मतलब तो मैं जाता हूँ नीचे गया। फिर वो उसके इधर क्यों सर इसको लेके जाने आया, मतलब जिंदा तो है 4 लोग क्यों आए, क्या सर इसका दोस्त है हम लोग बचपन का दोस्त है और शक्ल से लग रहा था कि समझाना चटे हुए। तो मैंने बोला तेरा दोस्त और ऐसा कैसा है, सर ये बचपन के दोस्त है सर, कुछ नहीं सर हम लोग घर जा रहे हैं, मतलब घर ही जा रहे हैं ना, हाँ सर घर जा रहे हैं। तो लोग पर्पस से उसका पापा ने नहीं आया, लोग कुछ ऑटो वगैरह में आया था, इसको ऑटो में बिठा के लेके गया। वो लड़का बेचारा घर जाने तक मेरा फोन कॉल, सर ये लोग मेरे पीछे कर रहे हैं, सर इधर उतरा उधर उतरा, सर ये लोग मुझे मार देंगे। फिर नेक्स्ट दिन 2 दिन के बाद आया कॉलेज में, उन्होंने क्या हो गया सर वो मेरा भाई है सर, मैं उसका भाई। सर यही होता है लड़कों में, एक दिन लड़ाई होती है। हाँ बट वो लड़ाई क्यों चाहिए मुझे समझ नहीं आया। एंटरटेनमेंट वो भी ऐसा फिजिकली सर अपने किसी बड़े हाँ लोगों को देखा है हाँ क्या है सर एक एसआईएस कॉलेज का लेवल एसेस ना उसमें क्या हुआ था कि एक स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट का रिलीजन के ऊपर कुछ झगड़ा चला था और फिर भगाया नहीं मार दिया सर, पीठ से मारा, इतना बड़ा वुंड हुआ 12 इंच का। पुलिस केस नहीं हुआ, पुलिस केस नहीं सर क्या पुलिस सर मैं बता दो एक गवर्नमेंट मेरे नाना ने बताया था राजस्थान में उधर हरियाणा में पार्टी का अरे ये बहुत देखो एक चीज है ना, मैं ये सब एग्जांपल आपसे इसलिए बोलता हूँ कि आप ना करें, टेक सम मैसेज एंड इधर क्या है ना मेरे से भी गंदा इंसिडेंट मुझे बोलता सुनो तो मेरा नाना का वहां पे ना उनका पॉलिटिशियन ना तो उनका नाना उनका पॉलिटिशियन पॉलिटिकल पार्टी है हां तो उधर उनको इन्वॉल्व किया था तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं सिर्फ नहीं पढ़ूं अच्छा होगा। तो उधर का एक जो लोकल गवर्नमेंट स्कूल है जहां पे बिकॉज़ वो इट्स एवरी 24/7 हां तो उधर उन्होंने एक लड़ाई किया और उस बंदे ने एक उधर क्या बोलते हैं उसका उधर तलवार को क्या बोलते हैं, कुकरी बोलते हैं
जो भी है उससे मार दिया सीधा पैर में डाला, इधर डाला, अपने स्कूल में भी तो हुआ था 10 सीधा नीचे। देखो आई थिंक ये सब वायलेंस इसलिए हो रहा है ना, वन बड़ा टोटली नहीं, वो तो अलग है, वो अलग है। फिर और वो बंदा खाने के बाद भी चुप नहीं बैठा, वो लेके भाग गया। पेनिसिलिन चलो ओके ओके बस अभी अभी दे गॉट सम च्यू टू बाइट चलो ओके अच्छा गुड बॉय a C point of unorganized sector ये दोनों है unorganized sector का C point लिखो write down no job guarantee C point no job guarantee सर इसके अंदर ये बी पॉइंट सर बी पॉइंट हैज नो रेगुलर जॉब विद लेस पेमेंट। हां यू डोंट नो सेम you know ऐसे है। no guarantee Sir, the B point is given no regular job with less payment. Isn't it the same? complete सर सी वाला D Hey boys, you are narrating so many stories. At least learn from those stories. Don't do such mistakes. You know, we don't use that. Yes sir, police come every time. And you are the chore in this. Come please. सर बच्चों के मैटर में भी पुलिस आ जाती है। सर हम लोग कॉमर्स कर रहे हैं, खाने गए थे, पुलिस आ गई बाहर। हाँ बोल रहे तुम मैटर लो। प्लेट लेके देने का पैसा खाओ और जाओ घर पे जाओ। उनके अर्टिगा अरे it's okay. चलो enough. No formal appointment. Next point. No formal appointment or removal procedure. No formal, formal. Yes. Appointment or removal procedures. No formal appointment or removal procedure is followed. And procedures are followed, not singular, plural. Next. Facilities like paid leaves. हाँ नहीं देने वाला वही मैं पहले लिखा facilities like paid leaves, comma medical benefits, OT. What is OT? Overtime. हाँ O और T capital लिखना are not provided to the workers. OT are not provided to the workers. Overtime तो it is given. Private unorganized में नहीं मिलता है। पैसा नहीं मिलता। अच्छा ठीक है तुल्ली का भी और ज्यादा डिस्कशन ओवर टाइम 1 घंटे का ड्यूटी होता है लेकिन मैं समझाता हूँ 8 आवर्स का ड्यूटी एज पर गवर्नमेंट उसके ऊपर अगर 1 घंटा ऊपर जाएगा तो दे हैव टू पे डबल अगर मुझे 1 घंटे में $20 मिलता था तो जो 8 घंटे के बाद जो ड्यूटी है मुझे उसमें $40 मिलेगा 1 घंटे के लिए क्योंकि एक्सेस कर रहा हूँ ना मैं फॉरेन कंट्रीज में ये सब मिलता है इंडिया में India there is a culture of overtime very normal. हाँ वेरी नॉर्मल No formal appointment or removal. जैसे आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको अपॉइंटमेंट लेटर रहता है ऑफर लेटर रहेगा इधर ऐसा कुछ नहीं है और आपको जब जॉब से भी निकालेंगे ऐसा नोटिस देना पड़ता है 30 दिन का या 3 महीने का इधर कुछ नहीं आज आप जाके आप अपना कार्ड बंद कर रहे हैं आपका कार्ड बोल रहा है सॉरी मतलब यू आर रिमूव्ड फ्रॉम द जॉब कर जाओ बोल देगा नेक्स्ट एंड द लास्ट and that's enough now you can go to public sector हाँ बस done ये एक्चुअली आप लोग ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ही है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ये है ऐसा है shall I give it in paragraph हाँ तो ये हाँ तो यही आप अपने ओन वर्ड्स में लिखो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पेज नंबर 159 hey listen the biggest difference between organized and unorganized organized is generally a public sector क्यों क्योंकि जॉब गारंटी दे रहा है फिक्स अपॉइंटमेंट है लीव है इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर सेम मे बी और मे नॉट बी अभी जैसे रिलायंस टाटा आर द बेस्ट देन इवन द गवर्नमेंट तो रिलायंस कैन आई से इट इज पब्लिक सेक्टर नो
Is Tata? No, but then they follow very strict rules. आपको benefits देना, provident fund देना, pensions देना, because they are registered companies. और these are registered or unregistered, unregistered है. और गवर्नमेंट को मालूम ही नहीं कि कंपनी ऑपरेट भी करता है. अगर आपके साथ हाँ पेमेंट नहीं मिला ये आप जाके अगर गवर्नमेंट में केस भी करेगा, गवर्नमेंट पहला पूछेगा वो रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड. तो गवर्नमेंट बोलेगा सॉरी वी कैन नॉट फाइल एनी केस बिकॉज वो तो गवर्नमेंट के अंदर आता ही नहीं है, उसने कोई भी सिक्योरिटी एक्ट कुछ पास नहीं किया. बट सिंस यू आर वर्किंग बिकॉज यू नीड पे, but then you have to face the brunt. What is that? No formal appointment, no OT, no medical allowances, no sickness benefit, कुछ नहीं मिलेगा. हाँ ये है कि पेमेंट जब तक आप काम कर रहे हैं you will get very good. But job security का मतलब क्या है? आपको कभी भी निकाल सकता है, but organized में नहीं निकाल सकता. So always you understand, organized sector is more close to public and unorganized is more close to private. बस इतना ही याद रखो because these two are not asked. It is there in the volume. If you want, I can give you distinguish public and private sector. Simple way. Chalo, everyone write down your own. I am coming around to check now. Sir, simple way. नहीं ये उसको लिखने दे. मैं नहीं दे रहा हूँ. I am correcting. Why should I? In next 5 minutes, I will start the new chapter. Yes. हाँ दिखाऊंगा. बोला तो मैं दिखाऊंगा. You complete the volumes. Which one you wanted to check? You said? No, these were the answers I wrote. You had asked me that, so I wanted to get it. Yes. Can unorganized sector can be called as private sector? देखो, not all the private sector are unorganized. अभी Reliance भी unorganized private है. Can I call Reliance as a unorganized sector? सर बहुत ऐसा कभी भी किसी भी पूरा नहीं कर सकते, कहीं पैसा इधर कर देते उधर कर देते. Well, listen. But then they are likely to get penalized by the government if it is reported by the concerned labor. But unorganized को government penalize नहीं कर पाएगा because first it is unregistered. Second, unregistered का मतलब ये कि he will do his own dreams type step. समझा? So not all unorganized are private sector, but all unorganized, all private sector cannot be. मेरे से पूछा और मैं उसको explain कर रहा हूँ, रियॉन कर रहे हैं मुझे देख के body. ठीक है and next time I will not do. हाँ please write down public sector. Are those firms? Wait. Sir, note. हाँ मैं दे रहा हूँ. Are those firms which are registered under central or state government? Which are registered under central or state government? Registered under central or state government. Full stop. The other name of this sector itself government sector. The other name of this sector itself is government sector. Registered under central or state government. Full stop. Job guarantee. अभी ये फाइंड अप कर देता हूँ. Job guarantee. Point here. Keep putting commas. Best payment. Medical and leave allowances. Job guarantee. Best payment. Medical allowances. Medical and leave allowances. And all such privileges. Which make this sector more lucrative. You know what is lucrative? Very attractive than any other sector. So it's like in many North Indian states, आज भी शादी करने के लिए लड़का का qualities government job में रहना चाहिए. भले वो चपरासी भी रहने दो. But And if whatever you do, lucrative मतलब government job है तो आपको लड़की मिलेगा. प्यून
किसी गवर्नमेंट अधिकारी के ड्राइवर पे अपनी जॉब मिल जाएगी। अरे नहीं, it is the set. They're not very educated over there, so they don't know the actual basis of private jobs. They think it's very unstable. Now at least slowly they should come out of it. Na? That is Sector. make the sector more lucrative. ये किसका है? आयशा ये राइट द फुल सेंटेंस माय डियर आपने 2 वर्ड में कैंसिल लिखा है ना हैंडराइटिंग इज ओके गुड गाइस हाउ मच यू आर टॉकिंग चलो राइट द नेक्स्ट टॉपिक So private sector. नो लेट अस गो टू पेज नंबर इसका वर्कशीट किधर है ढूंढना 180. 180 and 181 Aisha 180 and 181 check any of the answers you want me to give if not 180. 981 now you can write minimum I am getting minimum 2 answers now you write by the time I am plugging the videos for you guys What are the primary economic activities? Sir, first those activities which are involved in agriculture and allied are primary example.
चलो let's write what are this is. What Sir, are no this? right. Heading डालो, time डालो, रुको, जा, जा. Debu Nandi his name. सर इसके बाद मैं ये क्या कोई लाइन नहीं लगा है? चुपचाप रुको. Oh my god, that's not good. You are also not good to universe. Give me one geography volume. Anybody have? Sir, geography. It's here. It's here. हाँ. Write down the heading. Sir, Put geography. today's date. हाँ. Third chapter start कर देंगे. In Nerul branch, I'm almost completing this chapter. No problem. Notebook लिखो. हाँ, उसमें लिखो ना. A part is introduction. Hey boy, write down now. है ना? Water scarcity. These chapters are very simple. We can go quickly. Bring meaning. Then I think. Hey, this entire chapter, you guys sit there together for this work only. While the teacher is turning and writing, then you do. I know. No need for that. Then multi-purpose exams. I mean, let me turn and see now if anybody found copy. Pull the scope. One is advantages. Who is this? हाँ, अभी तो लिखते जाना. I'm just working on this chapter. In between, how do you expect me to correct? क्या है? Senior sir. I know. And then move over here. You are one the solar storm. Na? Let it be. Let it be. Sit down. Today is leave it. He'll pick it. Leave it. हाँ तो पढ़े रहने दे उधर. हाँ तो और भी अच्छा है. गरीब को नया मिलेगा. Rainwater harvesting. Yes, you need to write and you need to explain. We'll give a mouth shut and copy. Bamboo tip चाहिए भी नहीं. Definition and objectives. This is chapter which majority time they ask for the project. थोड़ा सा theory रहेगा, so we'll do that only, है ना? Project. Some schools they go adopt, but sometimes CBSE doesn't ask methods. It's easy for me to explain. M for method. Traditional method बस इतना ही chapter. Short and sweet. Traditional modern. अभी क्या करना? There are chapters which goes for 50 to 60 pages. ये होंगे 15-20 पेज में जाएगा. Traditional हाँ वो है ना manufacturing industry है, transport है. Why do you worry about the pages? Material क्या है वो देखना. क्या. After the lecture soon, right? Right. So to लेके जा. Should can you one right on today? Right. Definitely, but not today. I have Why, some sir? Okay, sir. urgent work. I have to fly to some area. Yes, lie not to be now. Fly मतलब urgently जाना है. Sir, which you said? हाँ है academy. Bridge. You You stay there. Yes, I stay there. So I will be there. Sir, आप जिधर जाओगे हम उधर आइए. So you drop weakness. मैं जहनुम में जा रहा हूँ. आ रहा है क्या? गलत हो ओके. अब मंदिर कब जाओगे? जब भगवान जी मुझे व्हाट्सएप करते हैं तभी हम लोग. Somebody you drop weakness. अच्छा प्रसादम चाहिए. बस इसके लिए मुझे मंदिर भेजा. नहीं सर आपके नहीं सर आपके वेल विशेस. कम सर आप अगर मंदिर जाओगे तो आपको एकदम अच्छे विषय मिलेंगे. हाँ मिलेगा सर. नहीं सर मतलब वो अलग ट्रांसफर करना है.
ये काम चलो लेट्स write this part. Write up. Hey, write down introduction. I'm giving. Yes, sir. हाँ? क्या होगा? 7 notebook किधर है? Water. Sir, 1 minute. Sir, 1 minute. Sir, water then आगे बोलो. No, sir, please wait. Please, sir. Sir, right. These people are अरे थोड़ा देर रुकना है. मुंह में क्या चना डाला? चबाते रहते. रुक दो. One of the most essential water, put a hyphen, one of the essential resource found on the essential resource. So pronounce in a different way, she'll jump up. Important resource found on the earth's surface. Put a dash. Supporting all forms of life. And that's it. You can put a pen down. Let me explain the chapter. supporting. All forms of life. Full stop. If they ask you for map questions, I will be teaching this chapter mainly for map, but thoda sa theory kabhi aata hai. But then also I'll do it whatever I can best. So first you have written introduction, correct? I don't need to explain how important water is for you and me. Everybody knows. But then I say the word is scarcity. How do you explain the word scarcity? Lack of water. Complete. Shortage of water. Before that, there is one textbook fellow whose name is Falcon Mark. He is not an Indian fellow. So he has given his definition. वही आपके textbook में और उतना ही लिखने का. Per day, per person, 1000 cubic meters दिया है. Cubic. I converted and checked. Is it close to 5 liters of water? 5 to 10 liters. अभी you and me are spaced in such an area where we are not measuring. कि आज मैं 5 liter लिया क्या 4 liter लिया पीने वाला पानी नहीं. Generally used bulb. So if you are not having per day per person, then you are suffering from a problem. Scarcity. Simple है. उसके बाद ये multi-purpose है. What is the meaning of that multi-purpose? Many purpose at one time. We have 3 types of dam: minor dams, major dams, and earthen. Earthen तो temporary है. Minor dams are those dams which are only for irrigation, only for cultivation. Major is for electricity generation, irrigation, fishing, canal transport, etc., etc. At one time, many purpose. So, samjha, multi advantage. It can reduce the problem of flood and drought. Correct? Electricity generation, good agriculture, etc., etc. और उसका disadvantage भी यही है. It disrupts the flow of the river. River का flow को obstruct करता है. I'll show you world's biggest dam. Unfortunately, it is again constructed by China. And then you will see dam construction is not a piece of cakewalk. एक तो आपको river को बंद करना पड़ता है. बंद मतलब flow को रोकना, divert करना पड़ता है. फिर डैम बनाना पड़ता है. फिर उसको चेकिंग के लिए उनको 3 महीना लगता है. Because एक बार पानी खुल जाएगा तो is the dam capable? And it requires high class of engineering. It's not ordinary. So India has major 7 to 8 dams, multi, and many minor dams. अगर आपको अभी बॉम्बे का मोरबी डैम करके रहेगा एक सुना रहेगा और एक शाहपुर में और एक लोनावाला में है. लोनावाला के आगे ये three dams if it is filled in water with the coming monsoon till the next year monsoon starts, Mumbai is full. But then not every time. There's a project called Narmada River Project. Still it is in controversy. Local people are saying no to it. Government has said yes to it. Government has constructed one side. Local people are still creating trouble. But then the project is there. So we have a place in Rajasthan where we have constructed a canal which is called as Indira Gandhi. During her time it was opened up. Or we call this Rajasthan Canal. Water comes all the way from Punjab. But then they are doing it. So understood? So next time when you visit, you understand that it has its own advantage and disadvantage. Then I say rainwater harvesting in Naya hai. Sir, how can we harvest water? We say allow the water to collect, allow the water to go underground. अभी हमारे city में या जहाँ भी हम लोग रह रहे हैं किधर underground? Everywhere concrete, everywhere tar road. But then there are villages who have this rooftop
they connect it with a pipe, rooftop from the terrace, connect it to a pipe and allow going underground. And that is nothing but it is rainwater harvesting. You turn your textbook or volume page to this. I think one I checked. ये है rainwater harvesting. ये modern method है, इसको rooftop बोलते हैं. समझ में आया? Harvesting क्यों कर रहे हैं? Because this excess water joining the gutter or joining waste, it should be allowed to go into the ground. So which season you can use it? तो एग्जाम में आप लिखो ड्राई सीजन. विंटर को भी ज्योग्राफी में ड्राई सीजन ही बोलते हैं. विंटर में बारिश मिलता है क्या? नहीं ना. So it is winter also dry season. Is it okay? So that I will be explaining here with the definition. Objectives I let you know. Then there are two methods. Traditional method एक bamboo drip irrigation जो picture आके आपके NCERT book में दिया है. Followed in Meghalaya. Cutting the bamboo into half. अगर आप bamboo को अगर half में cut करेंगे, अपना pipe का channel जैसे ही दिखता है. And allow the water to run from the hills to the छोटे. Let them do it. Then we always go for the word modern method. Modern method is nothing but rooftop rainwater collection. In Mumbai or in first in India, it was Sachin who has constructed a very palatial house, and he has invested money for this rainwater harvesting. Wherever the water is getting collected, he is allowing the water to pass through. Mechanism है, ऐसे नहीं कि कोई भी rainwater harvesting बनाता है. Understood? So the entire chapter stands here only. So the next thing that we have to study, only write only 2 lines. What is water scarcity? मैं अपने ओन में दूंगा, फिर हम लोग टेक्स्ट थ्रू ही जाएंगे. You write define water scarcity. Define water scarcity. Understood as insufficiency of water to continue water or to carry out, continue or to carry out, one of the same meaning alag alag. Daily necessary activities of an individual. Carry out daily necessary activities of an individual. Put a hyphen. Washing, cleaning, bathing, drinking, etc. Washing, cleaning, bathing, bathing को उसको वैसे ही बोलते हैं. बाथिंग नहीं बोलते. Bathing, drinking, etc. One more sentence. Due to lack of. उसे कॉपी करो ना. जैसे you left something. Due to the lack of regular monsoons. Come on. Problem of water scarcity is on rise. RISE, not RIC. Is on the rise. Scarcity. Put that water scarcity singular. Is on the rise. RISE. मतलब increase हो रहा है in different parts of the world. Now you can drop your pen. Let's have an open of the world. Parts of the world. Because now you and me don't attach too much importance to this problem because we have not gone through. But there are certain villages even in India today also. Drinking water is a real benefit for them. Or real, it's a costly affair. They walk miles to carry one pot of water. Might be Bisleri coming with that. Oh, camel do aata hai, Bisleri pita. That is all ad. But reality, people don't even get normal water to drink. Forget about safe drinking water. Sir, how do they carry out other activities? Main activity तो अपना पानी पीने का रहता है. जब वो मिला तो ना मैं आगे का बात करूं. So आज भी कुछ राजस्थान का distant villages, they do not have pipe connection, they do not have any water source, neither they have well, nor they have people, nothing.
But slowly and steadily, Government of India and many governments are coming out with various solutions. The one that we have to make our monsoons regular. How can we make our monsoons regular? Like how China. वो तो artificial वो trouble ही है. Then how do we reduce global warming? Trying to reduce the carbon. No, hey boy, you have to discuss with me, not with you. Sir, artificial what is? Seeding. You don't know? मैं उसका वीडियो बात करूँगा. Artificially clouds बनाते हैं, फिर वो 15 दिन के बाद बारिश करते हैं. But sir, then isn't that like artificial? Not good. अभी क्या करेगा? China comes up with formula. America uses it. Canada uses it. But then sometimes it might backfire. Sometimes क्या I feel कि nature के साथ वो क्या बोलते हैं interfere मत करो. है ना? You have created the trouble. In fact, there is a I don't know. You might not be knowing Ramayana slogan on some religious one where they've said Rajasthan once was a very flush green area. And how it has become desert. So once there was a saying of a saint that the number of crimes in this earth increase. For every crime, I will convert that land into a dry, parchy land. You know what is parchy? जो पानी नहीं मिला है 100 साल तक. So crimes increase. That is how today the Western Rajasthan is like this. या पे believe कर रहे हैं जैसा हो या ना हो, that's different. And even if you see the animal, both lion and tiger used to look similar. Sometimes geographers say, हाँ ये हो सकता है. Tigers initially did not have any stripes on the body. So lion or tiger almost same. Then they said there is a Panchatantra Jataka tales in which there was a big case of hunting, theft. So ये lion का community ने जाके महाराज से बोला, महाराज मतलब उस time the Lord Elephant कि we need to identify this is happening. तो elephant ने बोला ठीक है. He with his tongue ordered to the god, whoever does this, their entire generation will be lined with their body. Are you understand what I'm saying? Yes, sir. So after taking or stealing the hunt, this tiger entered into the woods. You know, woods मतलब जहाँ पूरा पेड़ पौधे घने थे. And they have done only the stripes of that tiger. In fact, today tiger is known for its stripes only. Especially अपना जो रॉयल बंगाल है, उसका अगर हेड का भी स्ट्राइप्स देखेगा ना एकदम सिग्निफिकेंट रहता है. एंड उसका स्किन क्वालिटी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट. व्हाई वन ऑफ द बेस्ट? दैट्स व्हाई चाइनीज पीपल डिमांड. आई हैव सीन नॉट सीन रियलिटी इन मूवीज एंड अदर थिंग्स. फुल टाइगर इज अपसाइड डाउन हैंगिंग. हेड भी नहीं है उसका और उसका स्किन भी नहीं. द पोचर्स हैव सोल्ड द स्किन एंड विद द हेड. So they remove all the things, they put that busa and other thing and keep the head and that, And in those days, ये मैंने देखा भी है, certain saint has the good habit of sitting over the skin of the tiger only. जो भी saint है या पूजा तो गवर्नमेंट ने बोला अगर तू saint है ना, तो animal को जिंदा रखने का कोशिश करने का. तो till that time, till today, if any saint is sitting on a tiger or any skin, he will be caught by the police first. चल निकल आ जा, ये मिला कहाँ से? So every animal, every life in our country, we have some historical and some are scientific reason. You never know what is there. Correct? So we always believe ये जो water scarcity आज है इंडिया में might not be tomorrow. But उसका और एक sign क्या रहेगा? जो आज है it can be aggravated. You know what is aggravated? Increase. So what is the solution? New method. Converting the sea water into drinking water. Majority countries have done it and they are very good success. India have done it, but it's a bad success. In fact, India ने वो फिर उस साइड से project ही बंद कर दिया. Israel does it, America does it, UK does it, even Gulf countries are doing it because Gulf countries में पानी किधर है ना? Drinking water नहीं है. But can we keep on doing this? No. We have to find natural method of increasing the which water? Fresh water. That is what this chapter is all about. Is it okay? So keep aside all your notebooks. Keep only your volume ready. Pack करके ready हो जाओ. Volumes और एक pencil रखो. 250 like friends. 15. हाँ तो मैं is very sharp on 15. Where did I say 25?
Okay. So next Saturday. Yeah. Yeah. And then